अब जितने भी लिख रहे हैं ना पूरा सही दिख रहा है. चेक हालो चेक. यस परफेक्ट. थैंक यू. ये प्रोजेक्टर चालू करो देना. क्या दोस्तों स्टार्ट करें. सुपर. यस वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स. गाइस गुड मॉर्निंग. क्या एक दिन ब्रेक आ गया तो इतने नाराज थोड़े हो जाएंगे यार. टेंशन मत लो. चलो कम ऑन गाइस. So friends, we are done with discussion about the first beautiful topic, introduction to income tax. In that few small points are left out, which we'll complete now. And today we'll also start with discussion about the second interesting, fantastic topic called क्या है बेटा? Excuse me. Residential status. Are we clear with that, everybody? All of us? चलो guys, बोलो बेटा. What is section 27? ASSE 29, 225A. शायद अभी रात में बैठे तो भी आधा जाएगा ये तो. इतना रिवीजन तो हो चुके हैं ना अभी. कभी प्रैक्टिस किए क्या? बोल बेटा. 225A, 231 हुआ क्या? अब आपके दोस्त को पूछे, आपका दोस्त आपसे पूछ रहा है या कोई और दोस्त से पूछ रहा है बोल 225 क्या है, वो बोल रहा है 225 है. अच्छा देखना पड़ेगा, तब मजा आता है अपने को. नहीं बराबर ना. जब अपना दोस्त सेक्शन नहीं बोलता है और अपन बोलते हैं सेक्शन नंबर तो ऑटोमेटिकली अपन खुश होते. इंडियन से यार, हम इंडियन से, हमारे अंदर बहुत फीलिंग्स है तो ऐसे बिहेव करते हैं हम. चलो कल जी, when you see a match also, when we win the match in the last over, that's excitement is different. When you win the match in 15th 16th over, excitement is different. करेक्ट ना यार. अब समझो 14 ओवर्स में ऑलमोस्ट स्कोर हो चुका है, 6 ओवर बाकी है, तो एक्साइटमेंट रहेगा क्या? वो क्या लगेगा? ठीक है यार जीत गए, अभी क्या है, अभी जीतना ही तो है. दैट फीलिंग विल कम. बट इन द लास्ट ओवर व्हेन वी विन, देखो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है. दैट एक्साइटमेंट लेवल व्हाट वी कैरी इज समथिंग सो अमेजिंग. इन द सेम वे when we tell section numbers, we feel so good about it because we know that content. It's a happiness what we carry, that we know that section numbers, we know that correlation. Clear? Chalo, what is section 231? Percent. 234 previous year. Section 3, section 4 chargeability section. What does chargeability section say? Income earned by an assessee during the previous year is chargeable to tax in assessment year. Exceptions है कितने बेटा? 5 बोलो बेटा. Shipping business of non-resident person leaving India permanently or for long time. Then AOP, BOI, AJP formed for what? Short duration or purpose. Then persons likely to transfer property to avoid tax. फिर discontinued business. बेटा clear है? Everybody, all these points make sense for all of us? Yes, please reply. Come on. Pakka clear? Sure? Excellent. Then what is section 112? Long-term capital gain general rate. What is the answer? 20%. 112A. Long-term capital gain on sale of equity shares or units of equity oriented fund or units of business trust through recognized stock exchange. अरे आप पूरा बोलो यार, सिर्फ शेयर्स के पास रुक जा रहे हैं यार आप लोग. कब वापस बोलो.
long-term capital gain on sale of equity shares or units of business trust through on which is taxable 10% on amount exceeding section 112. Excellent. What is 111A? Same case, not long term but short term. Will tax at the rate of 15% on amount exceeding. जानबूझ के पूछ रहा हूँ ऐसा because you should not get confused. बोलेंगे 1 लाख के ऊपर ही टैक्स लगेगा तो गया बेटा. Are we clear everybody? All of us? 115 BB. Casual incomes. 115 BB. Unexplained income, unexplained investments tax at the rate of 60% plus surcharge 25% plus cess 4%. Effective rate is 78%. Clear है बेटा? What is section 224? Income. और एक special concept पढ़ाया था आपको that whenever we get some subsidy or grant from the government, that is also an income. But if that subsidy or grant is reduced from the cost of asset, then we don't tax it separately as income. याद है बेटा ये चीज? डिस्कस करें हम लोग ये बात. दैट वाज स्पेशल पॉइंट व्हाट वी डिस्कस्ड. व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ इनकम टैक्स? All revenue receipts are taxable unless specifically exempt, and all capital receipts are exempt unless specifically taxable. बात हुई इस बारे में? बेटा बोलो. Exactly. Good. Then my dear friends, come on. Tell me now. Last class I think I gave a couple of questions as homework, which most of them I've done already. But let me open that once. And we also have some questions in that which we need to solve and close it. चलो ये तो था. फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे सर. याद है फर्स्ट क्वेश्चन? He started business on 29th March 2022. So he must close books of accounts on 31st March 2022 but not 31st March 2023. We discussed this? Everybody? बट मैं आंसर लिखाने वाला भी था आपको, बट आप लोग सब बोले सर, तो मैं इसलिए चुप बैठ गया था. बट आज तो लिखना है सर. ठीक है ना बेटा? ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर देते एक बार और ये चैप्टर क्लोज करके लेट्स मूव टू सेकंड चैप्टर. आर वी क्लियर? यस, ये क्वेश्चन तो याद है ना, अपन डिस्कस करें. चलो लेट्स स्टार्ट. आंसर्स फॉर द फर्स्ट चैप्टर. फर्स्ट क्वेश्चन. So whenever we write any answer, my dear friends, we have to write the answer in 3 parts. Part number 1, the actual main provision or the main section. I repeat again. Part 1 is what? Main provision or main section. Part 2, मतलब ऐसा आंसर में part 1, part 2 लिखना नहीं है. We need to divide into 3 paragraphs. Paragraph number 1 is the concept. Paragraph number 2 is the interpretation. Paragraph 3 is the conclusion. Now how we are going to write the answer is, as per section 234 and section 3, previous year is the year in which income is earned. In case where business is commenced in the middle of the year, then the previous year may not be of 12 months, and the previous year shall be closed on the 31st March following the commencement of the business. Correct, my dear friends? ये हो गया concept. Second paragraph, in the given case, since the business is started on 29th March 2022, the books of accounts must be closed on 31st March 2022. Last paragraph, hence, क्या नाम है इसका? X is not legally correct. You are getting my point, everybody? तो बेटा कैसे डिवाइड कर रहे हैं हम आंसर को? 3 parts. पहला पार्ट क्या है बेटा? Provision. कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं. उसके बाद interpretation. Finally, conclusion. That's how you have to write your answer. I mean, this is my suggestion to you, especially for tax, law paper and all your papers where law is involved, that you have to write your answer like this. That gives a better impression. आप सीधा बोल देंगे X is not legally correct. चल फुट. अरे ये क्या होता है यार? अभी बोलो तो सर ये क्यों? आप बोलेंगे ये गलत कर दिया X. अभी पहले ये तो बोलो कि किसके हिसाब से गलत किया. तो that's where what you come first? Section comes first. Then comes your interpretation. Finally comes your conclusion. You're getting my point, everybody? So speak out. Sir, if I'm going in my car and I park my car somewhere, a police fellow comes and tell me this is no parking area, straight away pay me for 1,000 rupees. मैं सीधा निकाल के दूंगा क्या? मैं पूछूंगा सर नो पार्किंग बोर्ड कहाँ पे भैया? कहाँ लिखा है ये नो पार्किंग है? पूछेंगे तो सर ना यार. फिर वो बंदा बताएगा देख ये व्हाइट लाइन देख, ये व्हाइट लाइन के अंदर गाड़ी है तो ठीक है, बाहर है तो भैया लगा. अगर मैं पूछूंगा फिर अगर टायर्स ही सिर्फ व्हाइट लाइन पे है, दैट इज ऑल्सो ए वायलेशन, पे.
योर टायर शुड बी इनसाइड द व्हाइट लाइन. वो बोलेगा ना पहले, उसके बाद ही मैं पे करूंगा ना यार. ये सीधा बोलते पे करूंगा, नहीं सरेंडर भैया प्लीज, ऐसा तो नहीं है ना यार. वी आस्क अ क्वेश्चन राइट. सो देयर इज अ प्रोविजन, देयर इज अ कॉन्सेप्ट, देयर इज अ कंक्लूजन. क्लियर? इसलिए मैं लास्ट क्लास आप जब बोले सर, मैं बोला ठीक है बाद में लिखते हैं. आर वी क्लियर? स्टार्ट. एज पर सेक्शन 234, 34 है ना बेटा? As per section 234 and section 3, as per section 234 and section 3, come on, previous year is the previous year is the previous year is the year in which income is earned. Previous year is the year in which income is earned. Previous year is the year in which income is earned. Correct, my dear friends? Full stop. Continue. Previous year need not always be previous year need not always be 12 months. Previous year need not always be, what sir? 12 months. Full stop. Continue. If business is commenced in middle of the year, if business is commenced in middle of the year, if business is commenced in the middle of the year, then previous year will start. If business is commenced in middle of the year, then previous year will start. Previous year will start from the date of commencement of business. Previous year will start from the date of commencement of business. Previous year will start from date of commencement of business and end on immediately following what sir? 31st March. And end on immediately following 31st March. Friends, clear है? Speak out. Next paragraph. Paragraph change कर दो आप. In the given case, कमा previous year shall commence on. बेटा देखो क्वेश्चन देख के बोलो कब कमेंस होता है. Previous year shall commence on which date? 29th March 22. Previous year shall commence on 29th March 22 and end on कौन सा डेट है बेटा? 31st March 22. Correct? No? Yes. 31st March 2022. That's it. Next paragraph. Hence, come on. X is not क्या बेटा? Legally correct. So you yourself understand, when a person is correcting your paper, he should feel comfortable with your answer, right? It cannot be a one-word answer which you are throwing on his face. It has to be a structured, proper answer. Then you'll get your full scores, right? That's where we always see, this is not a standard protocol that you have to divide your answer into 3 parts and all. But I'm telling this based on how suggested answers are given, and I've also been a part of valuation team and also paper setting team. So I know very well how back end we look at the answers. If you just look at only final answer, we are not so convinced.
If this question come for 2 marks, we'll only give 1 mark. If you just write the last line saying that he is not legally correct. Answer could be right, but I'm not okay to give you 2 marks because I'm not happy with your answer. It makes sense, right? So speak out. Sir, ultimately we are the people who want things to look very beautiful and fantastic. If you go to a shop and order a pastry, if that fellow doesn't put proper icing on that cake and just give a normal sponge cake, will you be okay with that? Did you pay a price for the sponge cake or did you pay a price for the icing cake? You paid price for the ice cake, then you definitely want a ice cake on it. Right? So in the same manner, we are writing an exam of the Professional Institute of Chartered Accountancy. We can't expect to write an answer in the straight format, whatever you want. This is the first and last time I'm telling all this. For every question, I'll not tell all this, but since we're writing the first answer, I'm telling all this. So that we'll be very cautious in writing the answer. For all the subjects, whatever it is, don't ever throw an answer. Don't ever throw an answer, because if you throw an answer, marks won't come. You might be good. Your answer might be fantastic. Your knowledge is good. But we have to present it, no, ultimately. Unless we present it, how will the person know that you have that skill and talents? You are being judged only based on the 3 hours paper, what you're writing, and the presentation, what you're doing. Your skill set is based on the paper. Correct, no? Because today's date, nobody is concerned about your effort. Everybody is concerned about the result. Barabar in here. That's the problem. We are living in that generation, so for that reason, we have to take that efforts. Clear? Everybody? Guys? Fantastic, good. मजा आ रहा है अभी. चलो सेकंड क्वेश्चन देखो सेकंड क्वेश्चन फिनिश करते हैं अभी. फिर जाना है बहुत जल्दी. वेट कर रहा है कोई अपना. रेजिडेंशियल स्टेटस. मेरे लिए कोई वेट नहीं कर रहा है. देखो. द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एक्स अ रेसिडेंट एज हाउ मेनी इयर्स सर? ये होमवर्क दिया था बट इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको पढ़ाया नहीं था, फिर इसलिए मैं बता देता हूं आपको. फॉर 22-23 कंप्राइजेस ऑफ सैलरी इनकम हाउ मच सर? 5,05,000. इंटरेस्ट इनकम कितना है बेटा? इसको तो टैक्स करेंगे ना हम. क्या करेंगे? इसको पहले ऐड करेंगे, फिर डिडक्शन. कौन से सेक्शन के अंदर? 80 टीटी. टीटी का फुल फॉर्म क्या है? नहीं पता क्या? कुछ है ही नहीं बेटा. अरे यार कुछ है ही नहीं यार. 80 टीटी सेक्शन नंबर है. अब नहीं पता बोले तो मेरा नाम जाता. फिर मत बोलो नहीं पता और नहीं है का बहुत फर्क है. नहीं पता मतलब आपको नहीं पता और आपके फैकल्टी नहीं बताया आपको. बहुत फर्क है, वो है ही नहीं. अरे एक सेक्शन पढ़ाऊंगा यार 80 सीसीडी करके बहुत जल्दी. सीसीडी का मतलब कैफे कॉफी डे है क्या? और सीसीडी का सेक्शन नंबर है बस. क्लियर है ना यार? वो सीक्वेंस है बस. देयर इज नो फुल फॉर्म फॉर दैट. कम ऑन. कंप्यूट इज टैक्स लायबिलिटी फॉर 23-24 assuming that he report 50,000 in what's our public provident fund. Sir, any person like life insurance premium, if he deposits money in public provident fund also, he will get deduction under one section called ATC. आपको बताया था ATC में there are so many points like 10 to 15 points are there in ATC. And all the points put together, ATC has got a maximum limit of 1,50,000. Now you might ask, क्या है सर वो 10-15 पॉइंट बता दो. अभी नहीं बताऊंगा. When I go to deductions chapter, I'll teach you. And by the time we'll go to deductions chapter, we would have already completed 8 to 10 points in different chapters. You're getting my points? Everybody? But आपको ये चीज तो याद रखना है कि ATC का मैक्सिमम लिमिट कितना है बेटा? 1,50,000. If this figure would have been 1,60,000, what will take? 1,50,000. If this is 2 lakhs, still what will take? 1,50,000. That's why I told you very clearly that deductions are subject to some conditions, subject to certain limits. When government is giving a benefit, उसका हमेशा एक condition, एक limit होता ही होता है. No doubt about it. Without putting a condition and limits, government will never give a benefit straight away. They always want to put some conditions and restrictions. Are we clear with this, everybody? Beta bolo? How do we solve this? Come on. Presentation is important. टैक्स ही पूछा ना सर वो. Computation of tax liability of Mr. X for assessment year 23-24. चलो करें सर. बेटा क्या क्या इनकम है बोलो.
सैलरीज कितना है बेटा? 5,05,000. Then income from other sources, interest on SB account. बराबर सर? बेटा बोलो कितना इंटरेस्ट ऑन SB अकाउंट? 8,000. अब मैं जब दोनों ऐड करूंगा तो क्या आएगा बेटा? ग्रॉस टोटल इनकम 5,13,000. ग्रॉस टोटल को सेक्शन में बताया था आपको, याद है? 14. एक्सीलेंट, वेरी गुड. GTI इज 5,13,000. लेस बेटा एक बार एक फॉर्मेट देख लो ना प्लीज. लेस फॉर्मेट देखते देखते लिखना प्लीज. डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, इसको अंडरलाइन कर दो. 80C कितना लिखा PPF ने? 50,000. 80 TTA interest on SB account. Total income 4 lakh. Sorry, 55,000. समझ में आ रहा है सर? Sir, I hope you got the presentation. You know the concept, but just presentation is what I'm trying to tell you. In exam, this is how you have to present. ठीक है बेटा? चलो अब जब टैक्स निकालेंगे, कैसे निकालेंगे टैक्स? अप टू 2.5 lakhs nil. 2.5 lakh to 4.55 lakh at the rate of 5%. कितना बेटा? 10,250. थैंक यू. टोटल हो गया 10,250. लेस रिबेट. रिबेट आएगा ना? इन द क्वेश्चन डिड दे से रेजिडेंट इंडिविजुअल? 87A. 10,250. Net tax payable is nil. How many of you did this answer already? PPF सोचे क्या 80C में आएगा ऑलरेडी? कैसे पता था? तब तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताया था मैं, प्रोविडेंट फंड तो बोला नहीं था. अच्छा उस समय बोला था कि प्रोविडेंट फंड ये सब आएगा करके. ओ वैसे प्रोविडेंट फंड है क्या बेटा? व्हाट इज प्रोविडेंट फंड? लाइफ इंश्योरेंस तो पता है आपको, इसलिए मैं पूछा नहीं. प्रोविडेंट फंड होता क्या है? क्या? सर दो तरह के प्रोविडेंट फंड होता है सर. एक तो RPF, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, वो सेविंग स्कीम की जैसा है. बट एक होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड. ये क्वेश्चन में पब्लिक प्रोविडेंट फंड था ना? पब्लिक प्रोविडेंट फंड मतलब कोई भी बंदा कंट्रीब्यूट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल शिवा तेजा कैन कंट्रीब्यूट टू PPF. मेरा कोई RPF, मेरा कोई एम्प्लॉयर नहीं है. आई एम ए प्रोफेशनल, आई डोंट हैव एनी एम्प्लॉयर. करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स? सो आई कैन नॉट कंट्रीब्यूट टू दैट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, बट आई विल कंट्रीब्यूट टू दिस पब्लिक प्रोविडेंट फंड. इट इज लाइक ए सेविंग स्कीम जिसमें इंटरेस्ट आता है. आप पूछ सकते हैं मेरे से अभी नेक्स्ट. अभी गौरव को डाउट आएगा, सर PPF में पैसा क्यों डालूं, मैं FD में लगाऊंगा ना, FD में भी इंटरेस्ट आता है ना. FD का इंटरेस्ट टैक्सेबल है बेटा, PPF का इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है. आई थिंक योर क्वेश्चन इज आंसर्ड. अगर क्वेश्चन आया तो करते क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं यार, हम पैसे देंगे और हर साल इंटरेस्ट आते रहेगा जो टैक्स फ्री है. और इसका 15 साल का लॉक इन होता है प्रैक्टिकली. 15 ईयर्स तक आप पैसे उठा नहीं सकते. 15 साल के बाद आपको लमसम पैसे आएगा इंटरेस्ट के साथ, जो टैक्स फ्री है पूरा का पूरा. और क्या चाहिए? इंटरेस्ट. ये PPF में 7% के आसपास आता है सर. 7% के आसपास देते हैं. FD में कितना आ रहा है? 6% के आसपास आ रहे हैं. सेविंग्स में कितना आ रहा है? 5.5%. थोड़े बैंक में 4%. सबका अलग अलग है. सर एक आदमी पैसा कमाए तो उसको कुछ तो करेगा ना यार.
उसका खर्चा हो गया, सब कुछ हो गया, बाकी जो पैसे बच गया, ही विल नॉट पुट लिक्विड कैश विथ हिम, नो. उसका दिमाग क्या बोलेगा, या तो इन्वेस्टमेंट कर, या तो उसका दिमाग ज्यादा है तो शेयर्स में लगा, कुछ एक्सट्रीम बंदा है तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जाओ, और कुछ उसका पैसे बहुत ज्यादा है हाथ में तो लैंड एंड बिल्डिंग में जाएगा. बराबर नहीं, आदमी तो पैसे तो रख के तो बैठे नहीं ना कोई भी. इफ यू आस्क मी सर हाउ मच मनी यू मेड, आई कैन नॉट शो एनी कैश. I cannot show any cash, but I know what investments I made. From where I have my capital there, that I know. But I'll not keep the cash idle, no? अरे यार बराबर यार, कैश आइडल तो कोई बंदा रखेगा नहीं यार. बैंक बैलेंस मेंटेन करके क्या करेंगे यार, कितना रखेंगे बैंक बैलेंस यार. सो गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी. रिजर्व तो अलग बात हो गया, बट बियॉन्ड दैट रिजर्व यू डू नॉट मेंटेन दैट, राइट? यस मैडम. No. It's public provident fund. It's managed by the post office department. पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट मैनेज करता है. आप ये सुने क्या, एनएससी करके, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और केवीपी करके होता है, किसान विकास पत्र. दिस एनएससी, केवीपी, पीपीएफ, देयर ऑल लाइक सेविंग स्कीम. आप जब उसमें पैसे डालते हो, आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं उसके अगेंस्ट कि आप इतने पैसे डाले उसके ऊपर बोल के, लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट ओनली, जिसके ऊपर इंटरेस्ट आता है. क्लियर नो? एनएससी का इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट है, ये इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट है. अब एफडी का इंटरेस्ट तो टैक्सेबल है. अब आप ये पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. दोस्त आपका नाम, सॉरी, सार्थक. अरे बढ़िया नाम है यार. अभी सार्थक को एक डाउट आएगा, सर जब आप बोल रहे पीपीएफ का इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट है, एफडी का इंटरेस्ट टैक्सेबल है, मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैं पूरा का पूरा पीपीएफ में डाल दूंगा क्योंकि इंटरेस्ट पूरा एग्जाम्प्ट है. दिमाग बोलेगा नहीं बोलेगा? मेरा दिमाग भी बोला है 10 साल पहले, जब मुझे पता नहीं था कि ये कॉन्सेप्ट क्या है. बट बाद में पता चला कि ये पीपीएफ में यू कांट डिपॉजिट मोर देन 1,50,000. पोस्ट ऑफिस वाला 1.5 लाख के ऊपर आपसे पैसे लेता ही नहीं है. 1 ईयर का लिमिट है. एवरी ईयर 1.5 लाख. They will not accept more than 1.5 lakh. अगर एक्सेप्ट करते ना, मैं खुद 5 लाख डालता हूं हर साल, मैं रेडी हूं. बिकॉज द रीजन यू माइट आस्क, अरे क्या सर मजाक कर रहे, क्या मजाक कुछ नहीं कर रहा यार. हर जगह जिधर भी इंटरेस्ट आ रहा है, हर जगह टैक्सेबल है. ये इंटरेस्ट आ रहा है, एग्जाम्प्ट है, और क्या चाहिए मुझे यार. 1% कम भी आए तो चलता मुझे, बिकॉज दूसरी जगह 6% आ रहा है, जिसका 30% टैक्स ही जा रहा है, तो 2% तो वैसे ही जा रहा है ना यार. और इधर उल्टा 1% ज्यादा ही आ रहा है इंटरेस्ट, जो टैक्स फ्री है. You're getting my point, everybody? Speak out. मेरा actually जब मेरा, I have a son who will turn 5 years old very soon in next 1 month. He will turn 5 years old. मैं जब मेरा बेटा हुआ ना, मैं पोस्ट ऑफिस जाके मैं खुद पूछा 2017 में, सर मुझे वापस और एक पीपीएफ खोलना है, 1.5 लाख अलग से डिपॉजिट करना है. Then that fellow told, no sir, not possible. We will count your son limit also, your limit only of 1.5 lakh combined together. आपका बेटा जब मेजर हो जाएगा तब अलग से अकाउंट खोल देना. माइनर का लिमिट पेरेंट के साथ ही हम ऐड कर लेते. ये सब इनकम टैक्स एक्ट में नहीं है, ये सब प्रैक्टिकल वो लोग फॉलो करते. समझ रहे आप मेरी बात? आई एम टेलिंग दिस बिकॉज यू शुड नॉट गेट ए डाउट. क्लास के बाद डाउट आता है, अरे सर ने बोला पीपीएफ अच्छा है, तो हर बंदा पीपीएफ में पैसा क्यों नहीं डालता है, जितना भी कमाओ पूरा पीपीएफ में डालो 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 डालो, इंटरेस्ट पूरा एग्जाम्प्ट है. हो नहीं सकता ना यार. हो सकता तो मैं तो वही करता हूं. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? In my house, let me honestly tell you, my father is depositing 1.5 lakh. My mother is depositing 1.5 lakh. मैं खुद कर रहा हूँ 1.5 lakh. My wife is also doing 1.5 lakh. हमारे घर से हर साल 6 लाख रुपए पीपीएफ में जाता है. The reason we do that is only because interest exempt. और कुछ नहीं है. हमको कोई शौक नहीं है पोस्ट ऑफिस से. Frankly simple. और मैं गया भी नहीं पोस्ट ऑफिस का. एक एजेंट है, वो बंदा आता है हर साल मार्च में, 23rd 24th मार्च को आता है, 26th ऑफ मार्च मेरा ड्यू डेट है, वो आता है, चेक लिखाता है, लेके जाता है बस. और मैं हर बार जब भी आता हूँ उससे एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, कुछ बढ़ा सकते क्या लिमिट? आई एम सो कीन, नॉट बिकॉज ऑफ अफेक्शन टुवर्ड्स पोस्ट ऑफिस, बिकॉज इंटरेस्ट इज टैक्स फ्री. और 15 साल है यार, क्या फर्क पड़ेगा, लॉक इन रहने दे, 15 साल पड़ा रहने दे. बराबर ना यार, मैं जब 50 साल का हूँ तब यूज कर लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा, मेरे को जरूरत तो नहीं है अभी, क्या करूंगा मैं लेके. यू गेटिंग माई पॉइंट? यस माय डियर फ्रेंड. गवर्नमेंट इज गिविंग एग्जाम्पशन. अब 2.5 लाख तक लिमिट क्यों है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट? गवर्नमेंट इज गिविंग एग्जाम्पशन. अब हर चीज पर टैक्स लगाएंगे तो आदमी तो मर ही जाएगा इंडिया में. ऑलरेडी बहुत टैक्सेस है. सो सम केसेस दे आर गिविंग एग्जाम्पशन, सम इंटरेस्ट दे गिव एग्जाम्पशंस. सर रिस्क कुछ नहीं है सर, पोस्ट पीपीएफ में रिस्क जब बहुत कम रिस्क है यार, क्योंकि गवर्नमेंट का है ना, और पोस्ट ऑफिस कंट्रोल्ड है ये पूरा, तो पैसे जाने का पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है. सर अभी मुझे एक बात बोलो, बैंक में एफडी लगाया आप, बैंक उड़ा दिया तो अब बोलो रिस्क है नहीं है? अब वो नॉट 1% का रिस्क तो हर जगह पे है सर. अब हम कुछ जमीन लेते,
समझते कि वो बहुत रेट डबल हो जाएगा, गवर्नमेंट ने वही जमीन पे रोड सैंक्शन कर दिया। होता है ना यार। एंड गवर्नमेंट, यू डोंट टेल मी दैट गवर्नमेंट डजंट गिव कॉम्पनसेशन। गवर्नमेंट गिव्स कॉम्पनसेशन। गवर्नमेंट गिव्स 2 times of compensation, but they give 2 times of government value, which is less than market value. सर हर लैंड का एक गवर्नमेंट वैल्यू मार्केट वैल्यू होता है ना यार, अलग अलग। गवर्नमेंट वैल्यू इज लेस देन मार्केट वैल्यू। गवर्नमेंट गिव्स 2 times of, गवर्नमेंट गिव्स 2 times of गवर्नमेंट वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू से कम है। अब रिस्क तो है ना यार, हर जगह रिस्क है यार। अभी मैं क्या बोलूं आपको। पीपीएफ पे हाँ चार्ज होगा ना यार। एंड आई मीन हिज क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम पीपीएफ वी कैन टेक ए लोन ऑल्सो। इंटरेस्ट कम होता है। अगेंस्ट योर पीपीएफ पॉलिसी यू कैन टेक ए लोन। Shiva Teja has got a life insurance policy. Against life insurance policy also I can take a loan. It's as good as मेरा पैसा मैं खुद लोन ले रहा हूँ यार, तो इंटरेस्ट तो कम ही रहता है यार ऑब्वियसली, बराबर ना। So getting clarity on this point everybody. Anyways, lot of discussion out of tax, but still समझ में तो आया ना आपको। The reason I discuss is only to make you understand that why we people deposit in PPF. मैडम आपको समझ में आ गया ना। So government is giving some exemptions. So good that you enjoy it. आप एक काम करो ना, वहां से आओ, वो डोर बंद करके आ जाओ। चलो, आर वी क्लियर विद दिस पॉइंट एवरीबॉडी? स्पीक आउट। सो आईटीसी में क्या क्या है बेटा? लाइफ इंश्योरेंस एक है, और अभी क्या लिखे हम? पीपीएफ। 2 पॉइंट कवर हो गए, और भी पॉइंट आएंगे एटीसी में, ठीक है बेटा। और एटीटीटी इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक का क्या किया हम? अरे पहले ऐड किए फिर लेस किए। क्लियर है ये प्रॉब्लम? हम झुकेंगे नहीं। चलो, कैन वी प्रोसीड सर? बेटा बोलो बेटा। अरे बहुत हो गया यार ज्ञान की बात, अभी वापस टैक्स में आ जाओ यार। आई एम हैप्पी टू डू दैट ज्ञान की बात, बट ये भी तो करना चाहिए ना यार। चलो, थर्ड क्वेश्चन, इसका आंसर मैं सॉल्व करूं क्या? कर दिया आप लोग? बोलो 15 ईयर्स का आंसर क्या है बेटा? नहीं करे क्या मैडम? इतना टाइम दिया होमवर्क के लिए। मैडम होमवर्क करे। वो तो होम में करे सर, मैं होम में नहीं रहता सर, मैं हॉस्टल में रहता हूँ। हॉस्टल में होमवर्क कैसा कर सकते हैं? आपने होमवर्क बोला है, हॉस्टल में थोड़ी ना बोला है। क्यों भूल गए थे? खाना खाए? कैसा नहीं भूले हो? मैंडेटरी है ये, मैं ऑप्शनल है क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है यार, हर चीज मैंडेटरी है लाइफ में। सार्थक किया है होमवर्क? गुड मैडम, गुड। सम आर वेरी नाइस, सम ऑफ द मैंडेटरी, ऑप्शनल, सब ऑप्शन ऑप्शन है। अब बोलो आंसर क्या है बेटा? 2,19,000। और मेरे को 990 ही सुना दिया, फिर एक बंदा बोला 19। बोलो। हाँ हो गया। ये 59 का है क्या? हाँ 60 का आंसर क्या है? अरे मैं बोलता हूँ 2,87,600 आएगा ना। $2,500 कमाना चाहिए ना। $600 कम क्यों आया? आप मेरे डाउट समझ गए? 2,500 कमाना चाहिए था ना, तो फिर 600 रुपए कम क्यों आया? 2,600 कम क्यों आया? अच्छा एचईसी का फर्क है 100 रुपए। हाँ ठीक है छोड़ दो फिर, हो गया डन डन डन। क्लियर क्लियर, हैप्पी सर, डन। आप लोग किए होमवर्क? वेरी गुड, सुपर गुड। फोर्थ क्वेश्चन हो गया बेटा? चलो डन। फिफ्थ क्वेश्चन लेट्स सी। चलो बेटा फिफ्थ क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन इनकम अक्रूइंग एंड इनकम ड्यू। बोलो बेटा, अक्रू का ड्यू का फर्क क्या है? सर 3 वर्ड पूछूंगा मैं आपसे, बराबर सोच के बताना फर्क क्या है।
accrue, due, receive. तीनों एक ही है क्या? बोलो. अब स्टूडेंट बोल रहा है सर तीनों अलग अलग है. आप अलग अलग लिखे ना तो अलग अलग ही होता है. हाँ तो अलग अलग है तो क्या है मतलब उसका मीनिंग क्या है? अक्रू मीन्स हम इनकम की बात कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहे हैं. जमा हुआ है. अच्छा. ड्यू मतलब सब कंबाइन ग्रुप आंसर दे रहे हो यार. कोई बोलो. सर तक बोलो बेटा. सोच रहा है. ठीक है सोच लेना 2 मिनट. मैडम आपको क्या लगता है ये अक्रू का, ड्यू का, रिसीव का फर्क क्या है? थिंकिंग. गौरव बोल रहा है सर मेरा फीस ड्यू है. ड्यू मतलब वही पे एक ही जगह पे सुना है, फीस कहाँ? ऐसा कुछ है क्या गौरव? नहीं. बोल बेटा कोई आंसर है? फ्यूचर में, फ्यूचर इनकम विच इज येट टू कम, दैट इज अक्रूड. मराठी मत, हिंदी में बोलो प्लीज. अगले साल का जो इनकम है. ओके मेक सेंस. मैडम रिसीव मतलब मिल गया. क्या मिल गया? कौन मिल गया यार अभी? ठीक है. इनकम ड्यू हो गया, मिले नहीं. अच्छा ड्यू क्या है मतलब? ड्यू मतलब अक्रू हो गया, ड्यू नहीं हुआ अभी तक. अरे यार जवाब तो प्यार से दिए बट जवाब बराबर नहीं दिए. हाँ मैडम. अकॉर्डिंग टू हुज डेफिनेशन? हाँ हर डेफिनेशन. अच्छा बोलो. Madam is talking about conservatism. Accountant blood is full of conservatism. Will record only anticipated losses but not anticipated incomes. बट सबसे पहले आपको ये बात बताओ कि ये अकाउंट्स का क्लास नहीं है, ये टैक्स का क्लास है. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग. टैक्स इज स्मार्ट. बोलो. अब आई डोंट वांट एन अकाउंटिंग आंसर, आई वांट अ टैक्स आंसर. मतलब लॉजिक क्या है इसका? अरे यार बोल दो आंसर. बोलो यार. स्पीक आउट. कैन आई टेल द आंसर नाउ? बोलो क्या. इफ देयर इज एन एम्प्लॉई हु इज डूइंग अ जॉब, किसके लिए जॉब कर रहा है वो? सबसे पहले बोलो यार. एम्प्लॉयर के लिए मतलब क्यों कर रहा है? प्यार से, मोहब्बत से. हाँ मनी, सिंपल. इज वर्किंग ओनली फॉर हिज सैलरी. सो मनी इज द ड्राइविंग फोर्स. सो मनी किक देता है आदमी को ऑटोमेटिकली. बहुत लोगों को वही किक देता है. द पॉइंट इज वेरी क्लियर दैट ही इज वर्किंग फॉर हिज सैलरी इनकम. करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स? सैलरी इज अक्रूड ऑन अ डेली बेसिस बट इट इज ड्यू only at the end of the month. So salary accrued when, sir? On a daily basis. So accrue basically means once activity is performed, income will accrue. But it is due only at the end of the month. Are we getting clarity? Speak out everybody. All of us. Received means what? Actually received. वो तो clear है, उसमें कुछ भी नहीं है. Sir clear? Now what is this line here? What is the question they asked? Write short note income accruing. Income accruing means once activity is performed, income will accrue. But income is due as per the contract. For example, when I put money in fixed deposit, 1 year fixed deposit, बीच में मैं उठा नहीं सकता उसको. Interest is accruing on a daily basis. Daily interest accrue हो रहा है ना सर. But it is due only at the end of what? 1 year. So I hope you are getting the example. Speak out. अब और क्या example दूँ आपको? और बस हो गया. समझ गए ना आप लोग? Speak out. Can an income which has been taxed on accrual basis be taxed again on due receipt basis? Obviously answer is no. If you pay tax on accrual, why will you pay tax again on receipt? You are getting my point? I hope we are clear with this point everybody. इसका एग्जाम्पल दूं क्या? सुनो. Shiva Teja has given some service to a client. This service is performed on 29th March 23. Okay? And on that date, I also gave invoice to my client. Invoice to my client. But the client actually made payment to me on 1st of May 23.
And if you observe carefully, this is financial year 22, 23, but this is financial year 23, 24. Correct, my dear friends? When Shiva Teja is following accrual system of accounting, when I prepare my P&L account, I will, let's say this value of service is 10 lakhs, I will record that 10 lakhs income. Yes or no? And in my balance sheet, I will record a debtor of 10 lakhs. Correct, no? Debtor है creditor है. And that's it. It's a debtor. Debtor नहीं है, debtor है. Clear? I record a debtor of what? How much, sir? 10 lakhs. That's called accrual system. But if I'm following a cash system, what will I do? I don't record a debtor. I don't record an income. I'll record only when income is actually received. In cash system of accounting, there is nothing called creditor and debtor. But accounting suggests, please follow accrual system. Income tax says, whichever you want to follow, you can follow. But let me tell you, your company's act clearly says, follow accrual system of accounting. And practically, every fellow follows accrual system. Because accrual system presents a better, true and fair view of your accounts. You're getting my point, everybody? Proper view of accounts will come in that system only, no? So getting my point, everyone? Are we all clear with this point, everybody? Sure. समझ में आया ये बात? Can I proceed? Done. Let's close the answer. Question number 5. चलो लिखो बेटा. Income accruing means income accruing means once the activity is performed, once the activity is performed, comma, income is accrued. Once the activity is performed, income is accrued. Full stop. Income due means the trigger point. Income due means the trigger point. T-R-I-G-G-E-R. Trigger point. Where the person is due to receive. Trigger point. समझ ना trigger point का meaning, sir? Everybody, example write. Please write example. Salary is accrued on a daily basis. Salary is accrued on a daily basis, but it is due. Salary is accrued on daily basis, but it is due only at the end of the month. Sir, I hope you are clear with this point, everybody. Yes? That's it. Next line. Next paragraph, right, please. If a person is following mercantile system of accounting, so mercantile accrual दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है. Clear, no? If a person is following mercantile system of accounting, and the income has been taxed, and the income has been taxed on accrual basis,
then it cannot be taxed again on receipt basis. Then it cannot be taxed again on what basis, sir? Receipt basis. Exactly. So getting clarity? That's it. हो गया question. चलो क्वेश्चन नंबर 6. दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर. एक बार एग्जाम आया था तो प्लीज देखो ना यार. क्या पूछ रही है? डिस्क्राइब व्हाट average rate of tax and maximum marginal rate under section 210 and section 229 C. क्या मीनिंग है इसका देखेंगे हम. Let me explain that to you, then we'll write down. Sir, one person, Mr. X, his income is 6 lakhs. टैक्स कितना होगा बेटा? 2.5 lakh तक nil. 2.5 to 5 lakh, 5%, 12,500. 1 lakh का 20%, 20,000. 20 plus 12,500, 32,500. उसका 4%. 325, 650, 1,300. 32,500 plus 1,300, 33,800. चेक कर लो कैलकुलेटर में. अच्छा बराबर है सर. सच्ची में सर. समझ गए ना आप? अरे सिंपल सी कैलकुलेशन है. 2.5 लाख तक तो जीरो है. 2.5 से 5 लाख कितना परसेंट है? 5%. वो है 12,500. और 5 लाख ऊपर 10 लाख तक कितना है? 20%. 5 लाख टू 1 लाख ओनली. नो, 1 लाख 20% इज हाउ मच? 20,000. 20 प्लस 12,500, 32,500. उसका कितना परसेंट ऐड करना है अपने को? 4%. 1% इज 325. 2% is 650, 4% is 1,300. Clear, no? Madam, right. Now what they told in the law is average rate of tax is equal to total tax divided by total income into 100, which is 33,800 divided by 6 lakhs into 100. 5.6. This percent is of tax what you are paying. So getting clarity? This is the meaning of this word called average rate of tax given by section 210. 27? 29? 210? Average rate of tax. So clear? Everybody? Pakka? There is something called 28 also. 28 stands for assessment. Assessment means assessment is an examination, verification which is done by the officer. We'll submit return of income, no? वो check तो करेगा ना assessment. Clear my difference? एजेंट नहीं है, असेसिंग ऑफिसर है. गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है ना. एक सेकंड ना. गुड. See this.
Found the section number 2(8). This is the procedure. क्या लिखा सर वहां पे? This is the procedure by which income of an assessee is what? Determined. It may be by way of normal assessment or by way of what? Reassessment of an income previously assessed. और last line पढ़ लो आप. Assessment procedure will be dealt in detail at final level. The reason for that is basically at your level they covered only up to the stage of return of income file करे तक स्टोरी है. फाइल करने के बाद ऑफिसर नोटिस कैसा देगा, आपने कुछ कम ज़्यादा दिखाए तो टैक्स कैसा पूछेगा, पेनाल्टी कैसा लगाएगा, वो सब स्टोरी आपको फाइनल में. ये गेटिंग माई पॉइंट्स. और 1% फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम. ऑफिसर ने कुछ एक्शन लिया नहीं, पर 2 साल के बाद उसको मालूम पड़ा कि 2 साल पहले आपने इनकम दिखाया पर कम दिखाया. ये गेटिंग माई पॉइंट्स. देन he'll screw up. He'll screw your happiness, not normally. In Hyderabad, recently, just few days back, just 10-15 days back, before your batch started only, one very big real estate company, they have done income tax raid. I don't want to name the person name, but one real estate company, they have done income tax raid. On what basis they have done income tax raid, you know? That person has put up an advertisement in Insta. Insta ad he has run saying that in last 2 years, they have done projects worth close to more than 1,000 crores. In last 2 years, they have done projects worth close to more than 1,000 crores. उसका P&L देखे तो 100 करोड़ का भी टर्नओवर नहीं है, और तू दे रहा है 1,000 करोड़ का एक्टिविटी दे रहा है, और उसमें एड में दिखा रहा है ये टावर बन गया, वो टावर बन गया, ये टावर बन गया, वो टावर बन गया. आ गया लव लेटर. क्या है लव लेटर? इनकम टैक्स नोटिस. एंड दिस पीपल हैव डन इनकम टैक्स रेड and collected the entire data. If that is what you told, if this is what it is, where is the difference? You're getting my point? बच्चा बोल रहा है इंस्टा पे देख के डालना पड़ेगा. नहीं, I'm just trying to tell you that government of India has been so cautious that income tax office or your GST office, they are checking all the angles. Wherever they get some data from any source, they are pulling that data and using that data. गलत नहीं है ना यार दोस्तों? क्या हुआ? सिंपल ऐसे ही, कुछ नहीं कर सकते अपन. What is section 2(8)? Assessment. It's a procedure by which income is determined. Are we clear? चलो डन. बोलिए मैडम. नोटिस आता है, इंडिविजुअल पे नहीं करता है तो इंटरेस्ट पेनाल्टी सब लगाएंगे ना. अच्छा, आप बोल रहे हो उसके बाद भी पे नहीं कर रहे? नहीं, पुलिस लास्ट में आता है. पुलिस कंप्लेंट क्यों होगा पहले? इनकम टैक्स को पुलिस से क्यों बुलाएंगे? मतलब इनकम टैक्स विल कॉल पुलिस ओनली व्हेन दे रिक्वायर सम फिजिकल सपोर्ट. वो बंदा कोई लीडर है, कोई डॉन है, वो बंदा बोल रहा है तू अंदर आएगा, तेरा हाथ पैर सब खत्म, तो दे विल टेक हेल्प ऑफ पुलिस. बट दे डायरेक्टली डोंट पुट द पर्सन इन जेल. फर्स्ट दे इंश्योर दैट उसका पूरा टैक्स कलेक्ट कर लेते, प्रॉपर्टी कुछ है तो बेच देंगे, सब कुछ ले लेंगे, उसके बाद अंदर बेचेंगे भाई साहब को. अरे बहुत काम है ना उसके साथ यार. सीधा अंदर बेचेंगे तो क्या फायदा है? अरे बेचना बनने के बाद तो आदमी कुछ भी कर सकता है यार. वो बोल रहा है डाल दो मेरे को अंदर, मैं एम रेडी. तो इनकम टैक्स वाले का एक्चुअली उसका पर्पस क्या है? इनकम टैक्स का रेड क्यों किया आप? तो पूरा कलेक्शन करो ना यार, उसके बाद तो करो ना, उसके अंदर डालो. अरे बराबर ना यार. You're getting my point. Directly they don't put the person in jail. They take them into custody. In income tax office only they put him, collect entire information, collect all the taxes, collect all interest, collect all penalty, और उसके बाद भी कुछ भी बचा है कुछ पे करने का, और ये इसके बाद बैलेंस नहीं है, उसका प्रॉपर्टी सीज कर लेते. एंड इनकम टैक्स कंडक्ट ऑक्शन एंड सेल द प्रॉपर्टी एंड रिकवर द मनी. उसके बाद कुछ बच गया तो उसको देंगे, नहीं बचा और स्टिल भी पेमेंट बाकी है एंड स्टिल द पर्सन इज नॉट पेइंग, अंदर डाल देंगे उसको. अब आप पूछ सकते हैं अंदर डाले तो क्या मिलेगा सर? अब क्या मिलेगा मतलब सेटिस्फैक्शन. इंसॉल्वेंसी स्टेटस मिल जाएगा, बट इंसॉल्वेंसी कैन नॉट. इंसॉल्वेंसी, बिफोर इंसॉल्वेंसी वट एवर इज द गवर्नमेंट ड्यूज इज द फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू रीपे. नो, आप सीधा जाके इंसॉल्वेंसी पिटीशन डालेंगे और बोलेंगे मैं इंसॉल्वेंट हूं. प्रॉपर्टीज तो है ना, प्रॉपर्टी तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते, अंदर डालेंगे बस, और क्या कर सकते. अच्छा, आपका क्वेश्चन है इसको टैक्स पे करना है पर इसके पास कुछ भी नहीं है. नहीं, आप यही बोल रहे हैं ना कि आप उसके पास कुछ भी नहीं है बट उसको पेमेंट करना है, तो डाल देंगे अंदर, क्या कर सकते. उसको बोलेंगे तो कुछ तो करके पे कर. वो बोल रहा है मेरे पास कैश नहीं है, मुंह में प्रॉपर्टी नहीं है, इमोबल नहीं है, कुछ भी नहीं, मैं कंगाल हो चुका पूरा का पूरा.
तो हम क्या कर सकते हैं यार? एटलीस्ट इंप्रूवमेंट डाल के तो बंदर डाल के तो खुश हो जाएंगे थोड़ी देर, बराबर ना? समझ गए ना? कोई बंदा अपना गाड़ी ठोक दिया और अपन नीचे उतर गए, उसको बोले भैया क्या कर रहे हैं, नॉनसेंस, 10,000 निकाल बाहर। बोल रहे भैया मेरे पास 1 रुपये भी नहीं, 1 रुपये भी नहीं है, छोड़ दो मेरे को, छोड़ दो। एक दे के तो जाते ना, खुशी तो मिलती ना एटलीस्ट। उसको रिटर्न तो दिए, एक इतना बड़ा चोट तो लगा गाड़ी को, एक तो दिए रिटर्न। मेंटल सेटिस्फैक्शन और कुछ नहीं। वो साइकोपैथ नहीं है, वो ह्यूमन बीइंग का नेचर है वो, बराबर ना यार? अभी अभी हम चलते वक्त कोई अपना पैर मार के जा रहा है, वो इमीडिएटली बोलता है अरे सॉरी 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 सॉरी। हम क्या बोलते हैं? इट्स ओके बोलते ना? ओ लगते ही बोल दिया अरे सॉरी 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 सॉरी, इट्स ओके बोलेंगे ना यार? वो मार के ऐसा करके गया, चुप बैठेंगे। अरे कम्मी ने इतना तो पहले 2-3 देके भेजेंगे ना यार, तो उसका रिएक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता ना यार। दैट्स द होल पॉइंट। एनीवेज डन। सो आर वी क्लियर एवरीबॉडी? चलो हम कहां पे थे सर? एक तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स हो गया, दूसरा क्या पूछ रहे थे वो लोग? मैक्सिमम मार्जिनल रेट। सर मैक्सिमम मार्जिनल रेट इज द हाईएस्ट रेट ऑफ इनकम टैक्स विच इज नथिंग बट 30%। क्या रेट है बेटा? 30% प्लस सरचार्ज 37% प्लस HEC 4%। 78% छोड़ दो, वो तो स्पेशल केस वाला है। कितना बेटा कैलकुलेट करो? 42 पॉइंट कुछ आता है ये, 42.74। दिस इज द मैक्सिमम मार्जिनल रेट, हाईएस्ट रेट ऑफ इनकम टैक्स। ये क्लियर है आपको? ये आपको इंटर में काम नहीं आएगा, बट फाइनल में बहुत काम आएगा। फाइनल में इन सम स्पेशल चैप्टर्स कॉल्ड टैक्सेशन ऑफ AOP, taxation of BOI, where they directly tell please pay tax at MMR. What is MMR? Maximum marginal rate, which is 42.74%. Getting clarity? चलो लिख देंगे आंसर। चलो आंसर लिखना है। 6th क्वेश्चन, लेट्स राइट द आंसर। As per section 210, how do you pronounce 210? Section 2? Exactly. As per section 210, comma, average rate of tax is equal to, as per section 210, comma, average rate of tax is equal to, average rate of tax is equal to total tax. Average rate of tax is equal to total tax divided by total income. Total tax divided by total income into 100. Total tax divided by total income into 100. So clear है ना? Sir, that's it. हो गया. Next line. As per section 229C, सर पिछले वाले कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल समझ गए ना आप लोग? ये 5.63% कैसा आया? क्लियर है ना? नेक्स्ट क्या लिखा? एज पर सेक्शन 229C, कमा, मैक्सिमम मार्जिनल रेट मींस, maximum marginal rate means, maximum marginal rate means the highest rate of income tax. Maximum marginal rate means the highest rate of income tax. That is 30% plus surcharge 37% plus HEC 4%. Bracket effectively 42 point कितना बोले बेटा? 74. Effectively 42.74%. मजाक नहीं है 42%, किसको बोलते हैं यार? चलो आर वी क्लियर? ये 7th क्वेश्चन हो गया। क्या है 7th क्वेश्चन बेटा? पढ़ो। हु इज एन एसएससी हु इज ए
Deemed assessee. Who is assessee in default? What is, sir? Speak out. Assessee means any person liable to pay tax. Deemed assessee is somebody who is not an assessee but still deemed to be an assessee. Example, agent of non-resident. Assessee in default who is liable to pay but is still not paying. But assessee in default also cover 3 cases. That 3 cases are what I'll tell you, which I didn't tell you before. Number 1, listen carefully. When Expert Academy, that is Expert Professional Academy Private Limited, is making a payment of, let's say, 10 lakh rupees to Shiva Teja, they are supposed to deduct 1 lakh and pay me only 9 lakhs. That 1 lakh is technically called TDS. Correct, my dear friends? It is whose responsibility to do TDS? Expert. Is it Shiva Teja's responsibility? Speak out. If they don't do TDS, they are known as assessee in default. Situation number 1. Situation number 2, they have done TDS but not paid to government. Then I am more worried. अब समझ गए ना मेरा problem? If they have done TDS but they don't pay to government, then I am more worried because I will not get my credit. Friends, clear? Everybody? Third one, person who failed to pay advance tax. Advance tax is the tax what we have to pay in the previous year itself. If we don't pay that, we have to pay interest. For whom it is applicable, how applicable and all, we have a separate chapter called advance tax. There we'll talk in detail. Clear everybody? बेटा चलो इसका आंसर लिखते हैं हम लोग. Put side heading section 27, 7th question का आंसर लिखेंगे. And there is no specific pattern in tax class. How do you want to write your answer? I mean, in costing, you would have learned some methodology like answer number 7 by so and so, page number so and so. That there it is required because wape you will have problem, solve karo, hundreds of questions and all. But here it's not like that. Here it's totally more going into concept and provisions. Correct? No? That's where choice is yours. आपको कैसा लिखना आप लिख लो. I'm not much worried. Clear? Because I'm sure Vinod Reddy sir would have told you, no, that ऐसा लिखो वैसा करो. हमारे को भी बोलते थे वो टाइम पे 2009, yeah. I was a student. अरे सच में यार. I was a student in 2009 when I was doing my CA final. 2009 or 2010 starting, something like that. 10 only, 10, not 9. 2010. 12 years back I was a student. चलो, anyways. वो स्टोरी बाद में बोलता हूँ, अभी लिखो. सब बोल रहे हैं स्टोरी बोलो ना यार. चलो लिखते हैं. Right on. Assessee means any person liable to pay tax. Assessee means any person liable to pay tax and also includes every person in respect of whom proceedings have been taken up. Proceedings have been taken up related to assessment of what, sir? Assessment of income or loss of such person, or any other person in respect of which he is
or any other person in respect of which he is assessable. In respect of which he is assessable. Clear now? Next point, next line. Deemed assessee means any person who is not an assessee, but he is any person who is not an assessee but who is deemed to be an assessee. Any person who is not an assessee but who is deemed to be an assessee. एग्जाम्पल लिखना बेटा, क्या है वो? एजेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट. नेक्स्ट पैराग्राफ. Assessee in default covers the following three cases. सर ये हम लिखे रहे थे पहले, समझ रहे आप मेरी बात? This part we didn't write before, so please write properly. Assessee in default covers the following three cases. Number 1, person who has not done TDS. Person who has not done TDS. Correct, no? Number 2, person who has done TDS but not paid to government. Person who has not done TDS, first one. Second one, person who has done TDS but not paid to government. फर्क समझ गया ना दोनों में? पहला वाला पॉइंट TDS किया ही नहीं, सेकंड वाला पॉइंट TDS किया बट गवर्नमेंट को पे नहीं किया. लास्ट पॉइंट, पर्सन हु फेल्ड टू पे. क्या बेटा? Person who failed to pay advance tax or tax. Person who failed to pay advance tax or tax. That's it. So clear? Everybody? Which section all this? Section 2. Last question. He is liable to pay interest. जो TDS करना चाहिए था उनको पकड़ते हैं. See, basically what happens is there is some concept called, जिसका भी टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर होता है, there is something called tax audit which चार्टर्ड अकाउंटेंट does. ठीक है? जब चार्टर्ड अकाउंट ऑडिट करेगा तो चेक करेगा क्या क्या पेमेंट्स किया उसने जिस पे TDS एप्लीकेबल और किया नहीं, वो CA कमेंट करता है उस पर, तो उससे इनकम टैक्स को मालूम पड़ता है कि भाई साहब इस पर TDS किए नहीं. अभी अभी बोल सकते हैं कि अगर CA ने कमेंट नहीं किया उसको मैनेज कर दिए. इनकम Institute of Chartered Accountants of India has become very strict that if any person is submitting a wrong audit reports, he is being suspended for some time. Disciplinary committee बोल के एक कॉन्सेप्ट है जो आप फाइनल ऑडिटिंग में पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो मालूम पड़ता है. तो देयर आर सो मेनी सोर्सेज, सो मेनी चेक पॉइंट्स हाउ दे वांट टू पुल द डेटा. तो आप कभी ये मत सोचो कि ये कैसे मालूम पड़ता है, पक्का मालूम पड़ता है. हर चीज का एक रूट है. आप जब भी पूछेंगे ना कोई क्वेश्चन, मैं इसका आंसर दूंगा, बिकॉज हर चीज का कोई रूट है. आर वी क्लियर विद दिस पॉइंट्स एवरीबॉडी? बेटा बोलो. चलो लास्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर रिलीफ. पता है ना अपने को? Where extra tax is more than extra income because of surcharge, then the difference between extra tax and extra income is allowed as marginal relief. But if extra tax is not more than extra income, there is no concept of marginal relief and it is applicable to all the assessees. ऐसा कुछ है क्या सिर्फ स्पेसिफिक लोगों को applicable है? बेटा बोलो. ऑलरेडी करें हम लोग ये सब. चलो छोड़ो, डन. So are we clear? Everybody? चलो बेटा बोलो अभी सेक्शन 27, 28 असेसमेंट, 29, 210 एवरेज रेट ऑफ टैक्स करें हम लोग,
224, 231, 234, Section 3, Section 4, 172, 174, person leaving India permanently or for long time. 174A, AOP, BOI, AJP formed for short duration or purpose. 175, person likely to transfer property to avoid tax. 176, 87A, 288A, 288B, 229C. नहीं है मतलब तेरे दिमाग में नहीं है, ऑलरेडी हम बोल दिए. मार्जिनल रिलीफ मैक्सिमम मार्जिनल रेट, MMR. क्या बोलेंगे उसको? MMR. कौन सा सेक्शन नंबर है बेटा? 229C. चलो 27, 229C, MMR. 29, 225A, 229C, MMR. याद हो जाएगा, कोई बात नहीं, अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे. सर क्लियर है एवरीबडी? नाउ सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. Let me give some amazing introduction for this concept. Then we'll proceed with this beautiful topic today, which is extremely wonderful and fantastic, known as what's sir? Residential status. One such unique topic which almost every time keeps coming in the exam for 4 to 6 marks, which is very, very scoring. Are we clear, everybody? And before I proceed to that, one last question, let me ask you, in exam, if the question is coming on calculation of, in the exam question is coming on computation of tax, can we do it? Any question for that matter? सबका सरचार्ज क्लैरिटी है अपने को, और हमने एक छोटा टेबल भी बनाया था सरचार्ज का, कंपनी का अलग टेबल बनाया था, बाकी सबका एक अलग चार्ट में आ गया. क्लियर है ना सर? कॉर्पोरेट सोसाइटी का सेम कंपनी जैसा ही है, और एओपी का तो इंडिविजुअल जैसा ही है, बट इफ एओपी इज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कंपनीज एंड मेंबर्स 10%, 15% उतना ही कहानी है. क्लियर है? और 112 को, 112A को, 111A को और डिविडेंड को 15% के ऊपर सरचार्ज लगेगा नहीं. सर फुल क्लैरिटी है वो कॉन्सेप्ट पे? हमने डिस्कस किया था परसों, मतलब 2-3 दिन पहले, एक दिन ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा उस पर ही बात करें हम लोग. पक्का क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? अभी बोलो 229C. MMR का फुल फॉर्म क्या है? मैक्सिमम मार्जिनल. 225A, सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर. सेक्शन 4 चार्जेबिलिटी सेक्शन. सेक्शन 174 shipping business of person likely to, only person likely to transfer property, person living India. तो person likely क्यों आया बेटा? बंदा बोल रहा है shipping business of person likely to leave India. shipping business of person likely to leave India. सब मिक्स कर दिया यार, पूरा मिक्स एंड मैच है पूरा. कवर 174 क्या है बेटा? person living India permanently or for long time. 27. अरे ये तो अभी रात में 1 बजे पूछेंगे तो बोलेंगे इसको तो. 28 असेसमेंट. 29, 210 एवरेज रेट ऑफ टैक्स. 209C अगेन आंसर. सर क्लियर है? 234 सेक्शन 4 सेक्शन 3 175. और नहीं सिखाए क्या? नहीं सिखाए यार, क्या क्या मजाक है यार. अभी पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स. अरे मत बोलो यार ऐसा डायलॉग यार, अभी फटती यार हमको ये डायलॉग से. 173 नहीं सिखाया बोलो, ठीक है मैं मान लूंगा. अब 175 नहीं सिखाया बोलो तो कैसा हुआ यार? सर क्लियर है? चलो आगे बढ़े. पक्का? राइट. Now listen carefully, my dear friends. We are talking about the next interesting, beautiful topic called residential status, which will start today. Today we'll cover a lot of interesting aspects in that. Listen very clearly. Please carefully. कुछ लिखो मत. Next 10-15 minutes, just relax, concentrate and focus. Everybody, ready? Done. Point number 1. There is something called Aadhaar. There is something called voter ID card. There is something called passport. सुने ये सब?
किस किस के पास आधार कार्ड है? थैंकफुली सभी के पास है. फोटो आपका ही है, पहचान पा रहे उसमें? मतलब क्वेश्चन वही है कि पहचान पा रहे क्या? मैं मेरा आधार कार्ड में तो मैं बहुत क्यूट लिखता हूँ, मतलब बहुत ही पुराना फोटो है, क्या करेंगे अभी. हाँ, वोटर आईडी कार्ड. ओह, ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा लोगों के पास है. अच्छा, ऐसा कुछ है, ठीक है, कोई बात नहीं. बाकी सबका अपना टाइम आएगा, कोई बात नहीं. बेटा, आधार कार्ड है ना आपके पास? पासपोर्ट? गुड, तो लोगों में पासपोर्ट भी है. नाइस. आई लास्ट यू वन क्वेश्चन. सार्थक, आपके पास वोटर आईडी कार्ड है क्या? अच्छा, ठीक है, तो आप एग्जाम्प्टेड है क्वेश्चन से. ठीक है. मैडम, आपके पास वोटर आईडी कार्ड है? नहीं. आपके पास पासपोर्ट है? नहीं. आधार कार्ड तो है. अब आप मुझे बोलो, आप इंडिया का रेजिडेंट हो, इंडिया का सिटीजन हो या सिटीजन नहीं हो? आर यू एन इंडियन सिटीजन? हाउ डू यू प्रूव? हाँ हाँ हाँ, आधार कार्ड. वंडरफुल. आधार कार्ड किसके पास है अभी? लंबा वाला आधार कार्ड? छोटा वाला नहीं, छोटा वाला तो सबके पास है, मेरे पास भी. मैं ही दिखा देता हूं मेरा लंबा वाला. हाँ, निकाल बेटा, निकाल बेटा. तू लंबा वाला रख के क्या कर रहा है यार? कहाँ घूम रहा है वो रख के? उसमें पीछे पलटा, कुछ अदर इंफॉर्मेशन कुछ लिखा हुआ रहता है उस पर. हाँ, पढ़ना बेटा, क्या लिखा है? थोड़ा जोर से. आधार इज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी बट नॉट. समझ गए आंसर? आज तक हम ये सोच के बैठे अपने पास आधार कार्ड है तो हम बन गए इंडियन सिटीजन. समझ गए सर? अब स्टूडेंट खोल के देख रहा है, अरे अपने आधार कार्ड क्या हुआ यार, इसमें है क्या? नहीं है इस पे, ये अपना छोटा वर्जन है. इन स्मॉल वर्जन यू डोंट फाइंड ए स्टोरी ऑफ दैट एंटायर स्टोरी. दैट्स व्हाई आई डिडंट आस्क यू दैट. क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? बेटा, उस पे क्या लिखा है? Aadhaar is a proof of identity, but not a proof of citizenship. So that point should be very, very clear for us that Aadhaar is only an identity proof, but not a citizenship proof. ठीक है ना? मैडम, थोड़ी देर पहले क्या पूछा था आपसे मैं? आप इंडिया का सिटीजन हो क्या? आर यू एन इंडियन सिटीजन? हाउ डू यू प्रूव? आधार तो नहीं है, आउट ऑफ क्वेश्चन. मैडम, आप इंडियन सिटीजन हो क्या? प्रूफ? सर दिख रहा है ना सर चेहरे से. बर्थ सर्टिफिकेट. सो पर्सन हु इज बॉर्न इन इंडिया इज एन इंडियन सिटीजन. अच्छा, तो साउथ अफ्रीका वाला बंदा इंडिया में आए क्रिकेट मैच खेलने. फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान वाला बंदा क्रिकेट मैच खेलने इंडिया आए, उसकी वाइफ को भी लेके आया था साथ में इंडिया को. ओके, वाइफ इज 9th मंथ और सडनली इंडिया में डिलीवरी हो गया. तो पाकिस्तान फादर, पाकिस्तान मदर, चाइल्ड इज इंडियन. होता है कैसा? हो गया ना पैदा इंडिया में. अरे बोलो यार, यस क्या? नहीं होगा. अच्छा, क्या मैडम आप इमेजिन कर रहे हो क्या? इतना हंस रहे, इमेजिनेशन पे चले गए क्या आप? ठीक है. बोलो, आप कैसे प्रूव करेंगे इंडियन सिटीजन? दिल में है इंडिया, ये सब डायलॉग मत बोलो मुझे. ये सब इमोशनल वाला डायलॉग नहीं चाहिए. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, नो इमोशंस. हाँ बोलो. हाँ यस मैडम, बोलिए. पेरेंट्स वोटर आईडी. योर पेरेंट्स आर इंडियन सिटीजन. हाउ आर यू एन इंडियन सिटीजन? अगर नहीं बोले तो यार ये बहुत खतरनाक आंसर है, अनएक्सपेक्टेड आंसर था ये तो. पेरेंट्स का वोटर आईडी और पेरेंट्स बोलेंगे ये मेरा बेटी है तो इंडिया सिटीजन हो जाएगी. Good one, actually. I love that answer. Nice. No, but practically we have to prove something. No, see, I mean, I agree that parents will tell my child, but documentary evidence, yeah, documentary evidence. But I like the answer, but very good. Next, दोस्त, तू देना कुछ अलग सा आंसर. हाँ, तू इंडियन सिटीजन है क्या? हाँ, कैसा प्रूव करता? पासपोर्ट है आपके पास? तो मैं कुछ पूछूंगा नहीं फिर. सर, इंडियन सिटीजन मीन्स ए पर्सन हु इज बॉर्न इन इंडिया एंड होल्डिंग अ वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ इन इंडिया. होल्डिंग अ वैलिड व्हाट प्रूफ सर? Identity proof in India, which does not cover Aadhaar.
Because Aadhaar, they have clearly specified that it's a proof of identity but not a proof of citizenship. He must be born in India and he must hold valid identity proof in India. So technically what we practically cover is your voter ID card. Voter ID card to Indian citizen को देते, बाकी लोगों को देते ही नहीं. So once you take an voter ID card, you are an Indian citizen, because a foreign citizen cannot take an voter ID card in India. That's not possible. Next is your passport, which is given only to an Indian citizens. Getting clarity, everybody? So in your case, since you did not take both, it's not that you are not a Indian citizen. Your father or mother would be having something called ration card or any other card. In that card, your name is also there. Then you are automatically become an Indian citizen, because that privileges, benefits are given only to an Indian citizen. Indian citizen means person who is born in India holding a valid identity proof in India. Getting my point? Now the reason why I discuss this point with you now is that under income tax law, under what, sir? Income tax law, taxability is not based on citizenship. Taxability is based on residential status. And the residential status concept is based on how many days the person has stayed in India. You're getting my point, everybody? Now I'll give a small example. Sir, Shiva Teja has got a passport in India. Shiva Teja is born in India. Wherever, whichever state it is, I'm born in India. Okay, guys? So I'm born in India. I've got a voter ID card. I've also got a passport in India. Clear? Now let's say I went to US. I stayed in US for next 10 years. And in US, I got a green card. Green card, they call it as a green card. So did I become a US citizen? Once you get a green card in foreign country, you become an US citizen. So clear with the points? So am I a US citizen? Yes. I'm an Indian citizen? Yes, because I have passport in India. Correct, my dear friends? Even though I'm citizen in both the countries, if the residential status is different, citizenship is different. But practically what happens is totally different. Practically what happens is when you go to US and you get your green card and tell, I want to become a US citizen, then they'll take a declaration from you that I'm surrendering my Indian citizenship. Henceforth, I won't be regarded as an Indian citizen. I'll be regarded only as an American citizen. And they'll cancel our Indian passport, all the passports, and issue a fresh passports of their country. You're getting my point? But what I want to tell you very clearly is that income tax is not concerned about your citizenship. Income tax is concerned only and only about your residential status. And residential status determination is based on some conditions. Now, yeah. Generally, multiple citizenship country doesn't allow. Country doesn't allow multiple citizenship. If you are a citizen in that country, this country may not allow you to take this citizenship also. But it's not mandatory, it's optional to the government. But income taxes, we are not concerned. Because income tax with citizenship se koi lena dena hai nahi. We are concerned only about your residential status. Now, today, we will start discussion only about individual, not about others. Okay, my dear friends? HUF, company, firm, सब बाद में देखते हैं. And इस chapter में सर हम तीन ही चीज पढ़ने वाले हैं. एक तो individual का how do we determine, then HUF का how do we determine, third कंपनी का how will you determine. Because बाकी सबका कुछ टाइम पास है, 2 मिनट में हो जाता बाकी सबका. Clear, my dear friends? Majority of the time will go only for individual. The reason for that is what? We are deciding based on duration of stay in India. Physical stay story will come only for individuals, no? कंपनी तो जा नहीं सकते ना बाहर, ऐसे जाना तो होता नहीं ना उसका. It's an artificial person, how will it go and come? You're getting my point, everybody? In case of individual, listen very clearly. I'll simplify the whole concept. See here, there is something called resident, somebody called non-resident. And for that, my dear friends, we have something called basic conditions given under section 6.1. Basic condition given under section what, sir? 6.1 has given 2 conditions. How many conditions are given? 2 conditions are given. And if you satisfy any one or both, we call you as a resident. If you satisfy none, we call you as non-resident. What are the conditions? We will see.
After 5-10 minutes, we'll see. Maybe we'll take a short break. After that, we'll see. Clear, my dear friends? Everybody? Come on. What are the first classification? Primary classification? Resident and non-resident. कितने condition है बेटा? 2 conditions. Both satisfied? Any one satisfied? Second one satisfied? First one satisfied? 1 and 2 satisfied? 1 and 2 not satisfied? Getting my point, everybody? Sir, then we'll talk about resident है तो क्या फर्क पड़ेगा, non-resident है तो क्या फर्क पड़ेगा. All that we'll talk in detail. Don't worry. Today only I'll tell that. That detail point I'll tell you. Today I'll actually give you the complete picture of this chapter. The next 2-3 days we can complete the balance story. Clear no? Because whenever we learn some concept, first we have to understand the whole framework of what the topic is all talking about. Then next story will become more simple and easy for us. Are we getting clarity? Now, if a person is resident, if a person is what, sir? Resident is further classified into another 2 categories. Sorry. Resident is further classified into another 2 categories. That is resident and ordinarily resident. Exam में students इसमें nonsense लिख रहे. Ridiculous answer they are writing. When I was correcting paper, I was shocked. One fellow wrote resident and ordinary resident. Ordinary क्या है? Ordinary? ये ordinary बंदा नहीं है, extraordinary बंदा है ये. It is not ordinary. It is ordinarily. Meaning पूरा change हो जाता है. Ordinary मतलब general बंदा है. Nonsense. Ordinarily मतलब generally, usually. That is the meaning of this word called ordinarily. So getting my point? It is not ordinary. It is ordinarily. Don't dare to write the word ordinary. अगर आपका कोई दोस्त बोलता है ordinary, उसको बोल देना all the best. Clear my points, everybody? This word is what? Resident and ordinarily resident. It's not ordinary यार. It's not ordinary. बच्चा आधा आधा सुनता है तो ordinary लिख रहा है तो एग्जाम में कोई सेंस ही नहीं बनता है उसमें. प्लीज क्लियर माई पॉइंट एवरीबडी. रेजिडेंट एंड ordinarily resident, usually resident, generally resident. Clear? Other one, resident but not ordinarily resident. Sir, I hope you got my bifurcation, everybody. Speak out, my dear friends. इसके लिए हम देखेंगे सर, there are something called additional conditions. Additional conditions under section 6.2 अलग है, वो HUF का कहानी है, बाद में देखते हैं. क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? सो 6.1 क्या बात करते हैं बेटा? 6.1 क्या है बेटा बोलो? 6.1 is basic condition. 6.6 is what? Additional condition. Additional में भी बेटा, additional में भी 2 condition है. कितने condition additional में? And if you satisfy both, we call him as ROR. इसको short में बोलते हैं सर ROR. आज के बाद मैं ये shortcut यूज करने वाला हूं. But in exam, don't write the word ordinary. ROR. This fellow is called RNOR. One or none. समझ गए आप लोग? So speak out. Now tell me, बेसिक वन सैटिस्फाइड, एडिशनल वन सैटिस्फाइड, क्या होगा उसका स्टेटस? RORA, RNORA, NRA. बोलो. See and tell, my dear friend. I'm saying basic one satisfied, additional one satisfied. क्या बोलेंगे बेटा? RN बराबर सर बेसिक बोथ satisfied, additional one satisfied. फिर भी हम उसको बोलेंगे RNOR. बेसिक 2 satisfied, additional 2 satisfied. 1 2. समझ गए आप सर? 2 0. Speak out. RN 0 2. 0 1. बेटा बोलो बेटा. Once that first one is 0,
he will definitely become a non-resident. So getting my point everybody? वो कंडीशंस क्या हम पढ़ेंगे, आज ही कंप्लीट करेंगे, आज ही पढ़ेंगे, टेंशन मत लो बिल्कुल. टुडे ओनली विल कंप्लीट दैट कंडीशंस, नो डाउट अबाउट इट. बट बेसिक कंडीशंस कितना है बेटा? 2 conditions. Anyone satisfied? Resident, both satisfied, both gone. And if you are becoming a resident, then there is something called ROR and RNOR. There is nothing called NROR, NRONR. ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, please. Clear, my dear friends? In non-resident, there is no further classification. In resident, there is further classification called ROR and RNOR. ROR का meaning full form क्या है बेटा? Resident and ordinarily resident. RNOR, resident but not ordinarily resident. सर यहां तक सबको क्लियर है? स्पीक आउट बेटा, पक्का क्लियर है? चलो छोटा सा ब्रेक ले लो, फिर हम लिखते हैं सब. ठीक है, डोंट राइट ऑल दिस इन द ब्रेक बिकॉज आई टेल सम कॉन्सेप्ट फर्स्ट, देन विल राइट. क्लियर एवरीबॉडी? डन, थैंक यू.
check. Yes. Yes, guys. So as I was telling you very clearly that under income tax law, we don't tax a person based on citizenship, but we are going to decide the taxability based on what? Residential status. And under income tax law, for individual, we have got primary classification as resident, non-resident. And resident is further classified into ROR and RNOR. What does ROR stands for? Resident and ordinarily resident. Other one resident but not ordinarily resident. Clear, my dear friends? Apart from this, we also have classification separately for HUF, companies, AOP, BOI also. Are we clear with this? Can we proceed and complete this basic discussion today? Special points we'll talk tomorrow, but the general point we'll complete today. Chalo, right. Put the heading of the chapter, residential status and scope of total income. Residential status and scope of total income. Residential status and scope of total income. Come on, what is the chapter name you have put? Residential status and scope of total income. Beta clear hai? Chalo dekho first point. Under income tax law, come on, taxability of a person. Under income tax law, taxability of a person is not based on citizenship. Taxability of a person is not based on citizenship. Is not based on citizenship, but it is based on taxability of a person is not based on citizenship, but it is based on what? Residential status. Correct? But it is based on residential status. Next point. In general, residential status is determined based on duration of stay in India. Residential status is determined based on duration of stay in India. Next point. In general, there are two classifications. That is resident and non-resident. In general, there are two classifications, that is resident and non-resident. Next point. In case of HUF, wait. Next point. In case of individual and HUF, there is further classification. Known as ordinarily resident. क्या है बेटा वो?
ordinarily resident. So you have to understand very clearly that for individual and HUF, there is a further classification. But for other than individual HUF, what is the story? Only 2 points. Resident, non-resident. Resident है तो क्या होगा, non-resident है तो क्या होगा, बस. But for individual HUF, what is the story? Resident, ROR, RNOR, NR. There are 3 classifications basically. Are we clear with this, everybody? Sir? चलो नीचे ये टेबल लिखना, then we'll talk more details. No, this is only for individual. HUF का अलग concept है. We are talking only about individual now. मैडम लिख लिए? हाँ ये भी ये जस्ट नॉलेज के लिए आपको लिखना है तो लिखो, मतलब आपकी मर्जी. वो जो बॉक्स में है वो आपकी मर्जी है. वो कॉन्सेप्ट समझाओ बस. वो शॉर्टकट है, बट शॉर्टकट सीखना नहीं है अपने को, लॉजिक समझना है. अगर ये हो गया तो फिर कंडीशन स्टार्ट करेंगे हम. Done? Yes, very good. So what is section 4? Charitability section. Section 6.1, basic condition. 6.6, additional condition. Basic condition कितने बेटा? 2. How many you have to satisfy to become a resident? Any one you satisfy, you'll still become a resident. Both satisfied, still you are a resident. But both are gone, then we'll call you as a non-resident. I'm sure by this time brain would have already understood that अगर रेजिडेंट है तो सिर्फ हम यही चीज़ों को टैक्स करेंगे, अगर नॉन रेजिडेंट तो हम सिर्फ यही चीज़ों को टैक्स करेंगे. उसके लिए हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं. बराबर सर? द रीजन वी आर क्लासिफाइंग लाइक दिस इज ओनली बिकॉज ROR is taxable on some set of income. RNOR is taxable only on some set of income. NR is taxable only on some set of income. Are we getting clarity, everybody? Speak out. Special cases we'll talk tomorrow, but today we'll complete all the general cases. Are we ready? Can I proceed? चलो अभी कुछ नहीं लिखना है, 5-10 मिनट रिलैक्स कर लो आप लोग, बस सिर्फ ध्यान से सुन लेना बस. चलो बेटा सुनो. वी एम टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड सेक्शन 6.1. व्हाट इज सेक्शन 6.1? 6.1 is what? Basic condition. Are we talking about HUF? Speak out. Are we talking about companies, AOP, BOI and all? We are talking only about individual only. Will take some time. HUF, AOP, company and all, 5-10 मिनट में कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं है उसमें. द रीजन फॉर दैट इज वन लाइन आई टेल यू. इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया. फॉरेन कंपनी इज रेजिडेंट इन इंडिया इफ द इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया. हो गया कॉन्सेप्ट. उससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं वो लोग? बोलो. इंडिविजुअल कैसे कुछ बोल सकते हैं? भैया इतने दिन रुको तो हम रेजिडेंट बोलेंगे, ऐसा आया गया आया गया आया गया तुम ऐसा बोलेंगे. बराबर ना यार? कंपनी क्या जाके आएगा क्या?
You're getting my point, everybody? Right. Basic condition, what they told is, number one, he includes she also. He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year. He must be in India for a period of what, sir? 182 days or more during the previous year. बोलो बेटा, first condition क्या है? He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year. अब मुझे बोलो, I am there for 50 days in Telangana, 50 days in Maharashtra, 50 days in Karnataka, 50 days in Jammu and Kashmir. Did I satisfy? Speak out. Did they ever say fixed place in India? Speak out. Next question. 50 days I stayed in Maharashtra. 50 days I stayed in Tamil Nadu. Next 50 days I stayed in Madhya Pradesh. Another 50 days I stayed in territorial waters. Did I satisfy? I think we got a clarity of what is section 225A. India covers territory, territorial waters, continental shelf and exclusive economic zone, seabed, subsoil underlying such water, and airspace about territory and territorial waters. So getting clarity, everybody? चलो बेटा, first condition क्या है बेटा बोलो? He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year. So in the previous year, if he's in India for 182 days or more, then we call him as what? Resident in India. So getting clarity? Let's take some examples to understand this better. हमको बताना पड़ेगा हम रेजिडेंट है या नहीं है. When we file return of income, we tell them whether we are resident or not. Clear, no? And if they get it out, if they want to check, they can check. Passport. So बराबर नहीं है. If you're going by aircraft or if you're going by vessel, या तो आप फ्लाइट में जाएंगे या तो आप वेसल में जाएंगे. दूसरा रूट का ऑप्शन क्या है? व्हीकल मत बोले यार. व्हीकल में आप पाकिस्तान जा सकते हैं या तो बांग्लादेश जा सकते हैं. उसके अलावा कौन से कंट्री जाएंगे यार आप? व्हीकल में यूएस तो नहीं जा सकते ना यार. एंड व्हेन यू आर गोइंग इन, व्हेन यू आर क्रॉसिंग एन इंडियन बॉर्डर, when you're crossing an Indian border using aircraft and all, let's say for example an international flight. I mean, I went to 4 or 5 countries. When I've been to 4 or 5 countries, everywhere at the international airport there is a immigration counter where they put a stamp of leaving India. And when we come back to India, again we have to pass through that immigration counter. Again they'll put a stamp, date of coming into India. और बिना स्टैम्प का आप वो लाइन क्रॉस भी नहीं कर सकते इमिग्रेशन काउंटर. You're getting my points? And let's say, I mean, I went to China, I went to Mauritius, I also went to Dubai. So when I went to Dubai, in Dubai airport, there is a immigration very big counter. Almost about 30-40 counters are there in a line. We cannot cross that counter without taking that stamp. Impossible. अगर वो स्टैम्प के बिना बाहर आदमी आ ही नहीं सकता. Impossible है वो. Even Indian airport also situation is the same. So what happens is basically when I reach Dubai, in Dubai airport they put a stamp. So and so date you have come. So and so time you have come. When I come back again to India, again Indian Immigration Authority put a stamp. They are called immigration authorities, who basically check when we are going, when we are coming. I think your how is answered. Yeah, for every how I'll give an answer. Don't worry. But हर how का जब आप अभी doubt आ रहे पूछो, दोंगे हम answer. So clear है? Everybody? So the reason I'm telling, encouraging her, asking that doubt because others would have get that doubt. अरे यार कैसे मालूम पड़ेगा? हम नहीं बोलेंगे, मालूम पड़ेगा, हम पता लगाएंगे. बराबर ना यार? Yes, my dear. Exception for? See, citizenship is an individualistic thing. It's a country individualistic thing. But income taxes, your citizenship is not a criteria for me at all. For me, criteria is only your residential status. You could be citizenship in you could be citizen in 10 countries also. I'm not bothered. I'm bothered only about your residential status. Clear enough? Starting whatever 5 minutes I spent time with you is only to make you understand what is citizenship. But in income tax, we are not concerned about citizenship. We are concerned only about residential status. Madam, barabar hai? Clear, no? Yes, please, come on, concentrate. First condition क्या है बोलो? He must be in India for a period of
182 days or more during the previous year. अब बोलो मुझे, बीएस मैडम बोलिए, क्या फर्क पड़ेगा अगर रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है? नहीं, 182 days का स्पेसिफिक पर्पस नहीं है. 182 days you satisfying means is as good as you have stayed more than half year in India. So we want to call you, designate you as resident. If you are resident, the way we tax you is different. If you are non-resident, the way you tax you is different. अब एक एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद ये डाउट नहीं आएगा आपको. पाकिस्तान प्लेयर, पाकिस्तान क्यों हर बार यार, अभी बोलो, अभी कोई साउथ अफ्रीकन प्लेयर, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, ऑस्ट्रेलिया का कोई प्लेयर बोलो. हाँ, डेविड वार्नर. अरे ये तो आजकल फुल कर रहा है इंस्टा में, तो पूरा साउथ का फैन हो गया वो, बहुत हाई लेवल पे. हम भी फैन हो गए उसका. चलो, सो डेविड वार्नर हैज कम टू इंडिया. ही इज प्लेइंग आईपीएल इन इंडिया. ओके, ही इज प्लेइंग आईपीएल इन इंडिया ईयरली वंस. ही इज स्टेइंग इन इंडिया फॉर 90 days, or let's say he's staying in India for 70 days. When he's staying in India for 70 days, is David Warner a resident in India? Speak out. As per first condition. Second तो अभी तक पढ़े नहीं, पढ़ेंगे हम लोग. Is he a resident in India? No. So when he is not resident in India, Indian government says your Australian income I will not tax you in India. वो बोलेगा जूते लेके मारेंगे, ऑस्ट्रेलियन इनकम टैक्स क्यों करेगा रे तू? बोलेगा ना डेविड वार्नर. सर यस और नो सर? बट टेक एन एग्जाम्पल लाइक शिवा तेजा, or example like Sarthak, example like Gaurav, example like our friends. All of us, we are all what, my dear friends? Indian citizen छोड़ो यार, citizenship छोड़ दो, उसको बाढ़ में जाओ. Citizenship छोड़ दो आज के लिए यार, कल बात करेंगे उसके बारे में स्पेशल केसेस में. बोलो, सो छोड़ दो citizenship आज. चलो बोलो, are we all residents? सर आप मुझे बोलो, हम लोग सब, including me, I mean let me tell you, I will satisfy that 182 days. आप लोग सब satisfy करते हैं 182 days? हम सब resident है सर. If we go to foreign, if we go to foreign, make money in foreign, Indian government says still pay tax in India because you are resident in India. तू हमारा आदमी है, तू जहाँ पे भी जाएगा हम तेरे पीछे पीछे आएंगे टैक्स के लिए. Wherever you go, our tax follows. You're getting my points? So taxation of resident is different, taxation of non-resident is different. Today only I'll teach that framework to you, don't worry. Sir, clear है यहाँ तक? चलो बेटा, what is the first condition? He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year. Chalo, Mr. X, he has left India for first time on 4th October 2022. ठीक है ना बेटा? सर हम प्रीवियस ईयर कौन सा देख रहे हैं? 22, 23. असेसमेंट ईयर 23. हमको तो पढ़ना यही है ना? अरे बेटा बोलो यार, हमको जो पढ़ना है तो यही पढ़ना है ना? प्रीवियस 22, 23. असेसमेंट 23, 24. अब मुझे बोलो ये इंडिया से कब गया? 4th October 22 को गया. हाउ मेनी डेज इज इन इंडिया? In India, he is there for how many days? $247 हो ही नहीं सकता. कब से कैलकुलेट करेंगे बेटा बोलो? 1st April. फैंटास्टिक, दैट्स अ बेसिक लॉजिक. हम बात करें 2023 प्रीवियस ईयर का, तो अप्रैल से कैलकुलेट करेंगे ना बेटा? अरे बोलो ना यार, कितना दिन है अप्रैल में? 30. अरे सोच रहे क्या यार तुम लोग? बंदा सोच रहा है 30 है, 31 है, 20. नहीं अरे क्या क्या पे हम लोग? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. 4 लेना पड़ेगा दोस्त. आई मेक यू राइट वन स्पेशल पॉइंट. जब हम वो पॉइंट्स लिखेंगे ना, उसके बाद स्पेशल पॉइंट भी लिखेंगे. स्पेशल पॉइंट व्हाट विल राइट इज डे ऑफ गोइंग, डे ऑफ कमिंग इज ऑलवेज इंक्लूडेड. इवन दो इज कमिंग एट नाइट 11:30, स्टिल आधी घंटा तो इंडिया में है ना, विल इंक्लूड इट. गवर्नमेंट बोल रहा है इंक्लूड करेंगे तो रेजिडेंट बनने का पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है, इसलिए इंक्लूड कर रहा है. वो चोर है, सॉरी, मतलब अच्छा आदमी है, मतलब ऐसा नहीं, मतलब दे वांट पीपल.
सब समझ गए मेरी बात एवरीबडी? कितना डेज हुआ? 180. बोलो, इज रेजिडेंट इन इंडिया? स्पीक आउट. सो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम कल. बेसिकली आई टेल यू, ये डेट पे गया, ये डेट पे आया, तो रेजिडेंट बनेगा या नहीं बनेगा. लाइक दिस क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व. क्लियर? अगर रेजिडेंट है तो क्या इनकम टैक्सेबल होगा, नॉन रेजिडेंट है तो क्या इनकम टैक्सेबल होगा, वो भी पढ़ने वाले. चैप्टर खत्म. क्लियर है? स्पीक आउट. खत्म नहीं हुआ आज, मतलब 2-3 दिन टाइम लगेगा, बट यू गॉट माई फंडामेंटल प्रिंसिपल. नो, सी व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस टॉपिक. Then what we'll start looking at it, 5 heads of income called salary, HP, PGBP, capital gains, other sources. सब कंबाइन करो, आगे अपना GTI. फिर हम पढ़ेंगे डिडक्शंस. निकाल दो, आएगा टोटल इनकम. उस पर कैलकुलेट करो टैक्स. कुछ टैक्स ऑलरेडी कट गया, जिसको बोलेंगे हम TDS, माइनस करो. बाकी कुछ पे करना है तो पे करो, ज्यादा कट गया तो रिफंड ले लो. बराबर है सर? अपना सिलेबस में इतना ही है. दो, इट्स नॉट अ कॉम्प्लेक्स थिंग, इट्स अ गुड थिंग, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसीज ऑफ इट. If we rightly understand what they want us to understand, we'll become perfect. Are we clear with this, everybody? बोलो बेटा. चलो, फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा? He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year. Clear? अपना previous year कौन सा है? Yes, that's it. Second condition. Option 2. सर और लिखना है, एंड लिखना है यहाँ पे. और क्यों और बेटा? दोनों में से एक भी सेटिस्फाई करेगा तो रेजिडेंट बनेगा ना. दोनों सेटिस्फाई किया तो दोनों गया नॉन रेजिडेंट. नॉन रेजिडेंट तो क्या होगा वो सब पढ़ेंगे अपन, डोंट वरी, स्पेशल टेंशन मत लो, देखेंगे आज. सेकंड ऑप्शन, ही मस्ट बी इन इंडिया. ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 60 days or more during the previous year and 365 days or more during 4 years preceding the previous year. हो गया कंडीशन. दो बेसिक कंडीशन हो गए. कौन सेक्शन है? सेक्शन 6(1). How many are there? 2. Both satisfied? Resident. Anyone satisfied? None satisfied? बोलो बेटा, फर्स्ट कंडीशन क्या है? He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year. Second condition, he must be in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during 4 years preceding the previous year. During 4 years. Now, how do I put this? If assessment year is 23-24, PY क्या है बेटा? उससे 4 साल पहले क्या रहेगा? 21-22, 20-21, 19-20. बोलो, ऑप्शन 1 क्या है? ये साल में ग्रेटर और इक्वल टू 182 डेज हो गया ऑप्शन 1. बेटा बोलो. हाँ. ऑप्शन 2 क्या है बेटा? और greater or equal to 60 and greater or equal to 365. That's it. The small diagram makes sense, no? Sir, या तो पहला ऑप्शन क्या है आपके पास? प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहना चाहिए, या तो 60 days in the previous year and 365 days or more during 4 years preceding the previous year. So, getting clarity? Everybody? बेटा बोलो. Now I'll ask you one question. Mr. David Warner, Australian player. Think properly and tell me. Australian player is coming to India. He is an Australian citizen. He is coming to India every year for 90 days. सुनो मेरी बात पूरा. Every year is coming to India for how many days, sir? 90 days. He is doing like this since last 5 years. पिछले 5 साल से हर साल इंडिया में कितने दिन आ रहे हो? 90 days. What is the residential status? Is he resident or non-resident? Speak out. He'll पक्का be a resident by satisfying second basic condition. अरे हर साल आ रहा है ना 90 days.
अच्छा 360, अच्छा 90 बोला मैं, ओ आई एम सो सॉरी, 100 days, my bad, 100 days, 94 360, no, yeah, 100 days, speak out, definitely will become a resident by satisfying what? Second basic condition. So clear? Exactly, because 90 days it becomes only 360 days, so it will become what? Non-resident. So getting clarity? Speak out. बोलो बेटा first condition क्या है? He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year, or he must be in India for a period of 60 days or more during the previous year, and 365 days or more during 4 years preceding the previous year. Getting clarity, everybody? Speak out. All of us. Chalo. I'll ask you one question. Think properly and tell me. 1 minute. One person, Mr. A, in previous year 22-23, he is there for 65 days. $100 days, 14 days, is he a resident or non-resident? Speak out, beta. पक्का? क्यों? कितना आ रहा है? 350. एग्जाम में जानबूझ के ये भी देंगे, नीचे वाला भी. एग्जाम इंटेंशनली दे गिव दिस ऑल्सो. जब हम कैलकुलेट कर रहे तो एक्साइट होके, टेम्प्ट होके ये भी ऐड कर देंगे तो खत्म. करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स? वी शुड नॉट गेट एक्साइटेड. ब्रेन शुड टेल अस दैट बेटा जो लास्ट में दिया है वो अपने को बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है, मुझे सिर्फ देखना है 4 years. तो 4 years मिलकर कितना हो? 354. बट आई वांट 365. सो डिड ही सेटिस्फाई सेकंड बेसिक कंडीशन? नो. फर्स्ट वाला तो कैसे भी गया, 182 तो है ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे उसको? नॉन रेजिडेंट. यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबॉडी? स्पीक आउट एवरीवन. ऐसा क्वेश्चंस आएंगे सर जो हम सॉल्व भी करेंगे, जो एग्जाम में भी आएगा. आर वी क्लियर एवरीबॉडी? गुड. यस मैडम बोलिए. बोला ना रेजिडेंट बना तो फॉरेन इनकम पे टैक्स करेंगे हम. जनरेट होती वो भी टैक्स करेंगे हम इंडिया में. सर क्लियर है यहाँ तक? सर स्पीक आउट बेटा. चलो कुछ भी लिखना नहीं है, रिलैक्स करो. ये भी खत्म करते फिर उसके बाद ही लिखना है अपने को. इसके लिए आई टोल्ड यू दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट्स व्हाट इंडियन गवर्नमेंट हैज साइंड विद more than 150 plus countries, through which we will not pay tax in both the country, we will pay tax only in one country. Which country? The agreement will tell. बीच में एक बार टॉपिक आया था इस बारे में, याद है? Shiva Teja went to US, made money in US. US will tell pay tax in US because you made money in US. India is telling pay tax in India because you are resident in India. But दो कंट्री में तो मैं टैक्स पे नहीं करूंगा, एक ही कंट्री में पे करूंगा. That's based on double tax agreement, which is there for you in CA final. Clear friend? But CA में आपको इतना ही पूछेंगे, is it taxable in India or not? We will tell yes. We will not tell no. No depends upon double tax agreement and all. इतना बोलने की जरूरत नहीं है. They'll only ask you yes or no. We'll tell yes. So getting clarity everybody? चलो basic condition with section. Section 6(1). This is 6(6). What condition? ये किसको applicable है? सिर्फ रेसिडेंट को applicable है. अगर बंदा नॉन रेसिडेंट है तो कहानी खत्म वहीं पे. क्लियर है सर? What are the additional conditions? Number 1, he must be resident in India in at least 2 out of 10 previous years preceding the previous year. सर क्या लेने बेटा, वो पढ़ो एक बार. He must be resident in India in at least what? 2 out of 10 previous years preceding the, मतलब previous year से पहले 10 साल, in last 10 years, at least 2 years, he must have been what? How will he become resident?
हाउ विल बिकम रेजिडेंट? सैटिस्फाई एनी वन बेसिक कंडीशन, बन जाएगा रेजिडेंट. सब बराबर सर? स्पीक आउट बेटा, एवरीबॉडी. नेक्स्ट, शुड आई राइट एंड और? एंड. सर लिखे ना हम लोग, बोथ एडिशनल कंडीशन आर और बनने के लिए. बेटा बोलो बेटा. एंड सेकेंड कंडीशन, ही मस्ट बी इन इंडिया. ही मस्ट बी इन इंडिया मतलब रहना चाहिए. सर पहला वाला पॉइंट बोला ही मस्ट बी रेसिडेंट इन इंडिया. सेकेंड वाला पॉइंट बोल रहा है ही मस्ट बी इन इंडिया. फॉर ए पीरियड ऑफ 730 days or more during 7 years preceding the previous year. बेटा समझ में आ रहा है कंडीशंस? चलो बोलो बेटा, पहला कंडीशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी बेसिक कंडीशंस वी हैव? 2. If we satisfy 2, what do we call him? Resident. Anyone, what do we call him? Resident. Both gone, non-resident. रेजिडेंट का कंडीशंस क्या है? बेसिक कंडीशन क्या है बेटा बोलो? ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 182 days और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. और he must be in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during 4 years preceding the previous year. अरे बेटा प्लीज पार्टिसिपेट करो यार, बराबर है. प्लीज कम ऑन, गेटिंग क्लैरिटी एवरीबॉडी. चलो फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या है बेटा, वापस बोलो. He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year. Or he must be in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during 4 years preceding the relevant previous year. अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो गया वो बंदा रेजिडेंट बनेगा. दोनों भी गया तो नॉन रेजिडेंट बनेगा. अगर रेजिडेंट बनेगा तो हम फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे. क्या बेटा? ROR and RNOR based on additional condition. Which section? Section 6. 6. What was condition? He must be resident in India in at least 2 out of 10 previous years preceding the previous year. And he must be in India for a period of what? 730 days or more during 7 years preceding the previous year. So getting clarity? चलो बेटा, इसका क्लैरिटी हम ज्यादा लेते हैं अभी. और सुनो एक बार ध्यान से. सब प्रीवियस ईयर 22, 23, ठीक है. उससे पहले 10 साल क्या होगा? 2021, 1920, 1819, 1718, 1617, 1516, 1415. हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6. बीच में गया, सॉरी. इट्स ओके, अभी हो गया. अभी 21, 22, 2021, 1920, 1718, 1415. हो जाएगा ना? हो गए 10. बेटा बोलो. चलो बेसिक कंडीशन कैसा डिफाइन करेंगे हम? या तो यहां पे ग्रेटर और इक्वल टू 182, और सेकंड ऑप्शन क्या है बेटा? ग्रेटर और इक्वल टू 60 एंड ये 4 साल ग्रेटर और इक्वल टू 365. बराबर है? ये हो गया आपका बेसिक कंडीशंस. दोनों में से कुछ ना कुछ सेटिस्फाई कर दो, आप बन जाएंगे रेजिडेंट. दोनों भी गया नॉन रेजिडेंट. अगर रेजिडेंट बन गए तो हम क्या देखेंगे बेटा? नेक्स्ट एडिशनल कंडीशंस. क्या है एडिशनल कंडीशंस? इन लास्ट 10 years you must be resident in 2 out of 10. रेजिडेंट कैसा बनोगे? कोई बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करके बनोगे रेजिडेंट. अरे बराबर ना यार. एंड ही है ना बेटा? बेटा बोलो. एंड
समझ गए? Greater or equal to कितना days? 730 days. Sir, I hope you understood. These are what conditions? Additional conditions. And these are given by section 6. These are given by section 6(1). बराबर है? समझ में आए? बेटा बोलो. Speak out. And my humble suggestion to you, always, whenever we are solving any question on residential status, और जब हम additional conditions का evaluate कर रहे, to check whether he is ROR or RNOR, to check whether he is ROR or RNOR, I always advise you to check second additional condition first, जो बहुत ज्यादा easy है. क्या है बेटा? Last 7 years whether it days or more. I'll tell one line now. आप बराबर बोलो सही है नहीं है. अगर सेकंड वाला सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फर्स्ट वाला देखने का कोई सेंस ही नहीं है. अगर सेकंड वाला सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फर्स्ट वाला देखने का कोई सेंस ही नहीं है. क्यों? फर्स्ट वाला सेटिस्फाई करके करेगा क्या तू? तभी भी तो RNOR बनना है ना. अरे यार बोलो यार, जब सेकंड वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो कैसे भी RNOR है, तो फर्स्ट वाला देख के मैं टाइम पास क्यों करूं? See, you are getting why I am trying to tell you this point, you know. See, अगर आप फर्स्ट कंडीशन एवेल्युएट करना है आपको 2 साल में 10 साल में 2 साल रेजिडेंट है या नहीं है, फिर आपको वापस वो 2 कंडीशन चेक करना पड़ेगा. 730 चेक कर लो ना पहले, इजी हो जाएगा. अगर 730 गया डूब गया वही तो खत्म ना. तो फर्स्ट वाला देखो ही क्यों मैं? फर्स्ट वाला सेटिस्फाई हो गया तो क्या करूं भाई? फिर भी RNOR तो है. समझ गए? एग्जाम में एक बार छोटू सा सिंपल सा क्वेश्चन आया, नाम याद नहीं मुझे, बट आई रिप्लेस दैट विद डेविड वार्नर. डेविड वार्नर, an Australian citizen, has come to India every year for 100 days. David Warner, an Australian citizen, has come to India every year for 100 days. Determine residential status whether he is ROR, RNOR or NR. सौ दिन 10 साल से ऐसे ही कर रहे हैं. पिछले 10 साल से हर साल 100 डेज आ रहा है इंडिया को. उसका स्टेटस क्या बनेगा? बोलो बेटा क्या है आंसर? RN. क्यों? रेजिडेंट कैसा बना वो? He became a resident by satisfying second basic condition, but he will not become a ROR because एडिशनल कंडीशन सेकंड वाला क्या है? 730 डेज और मोर. ये हर साल कितना आ रहा है? 100 दिन. 7 साल में कितना हुआ? 700 दिन. करना था अपने को कितना? 730. तो गया ना सेकंड कंडीशन. फर्स्ट वाला चेक करूं क्या मैं? टाइम वेस्ट करना है क्या अपना? तो क्या है आंसर उसका? RNOR. खत्म कहानी. So getting my point everybody? So speak out बेटा. पक्का clear with this point all of us? Yes. How many basic conditions are there? What are 2 basic conditions? He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year, or he must be in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during 4 years preceding the relevant previous year. Preceding the previous year, correct? Additional कितना है बेटा? 2 condition. Basic condition with section 6(1). Additional with section. Additional section 6(6). सर क्लियर है? Let's start. Come on. ऑलरेडी हमने एक चार्ट लिख दिया ना सर. बेसिक का है तो एडिशनल है तो इतना कंडीशन लिखते हैं अभी. पुट साइड हेडिंग बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6(1). बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6(1). चलो लिखो फर्स्ट पॉइंट. चलो क्या बेटा फर्स्ट पॉइंट? ही मस्ट बी इन इंडिया he must be in India for a period of he must be in India for a period of he must be in India for a period of कितना बेटा? 182 days or more. He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year.
He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year. Or बोलो बेटा सेकंड कंडीशन क्या है? He must be in India. He must be in India for a period of क्या बेटा? 60 days or more. He must be in India for a period of 60 days or more during the previous year. He must be in India for a period of 60 days or more during the previous year. And 365 days or more and 365 days or more during 4 years. And 365 days or more during 4 years preceding the previous year. सब चढ़ती जिंदगी में. चलो हो गया ना? चलो नेक्स्ट नीचे लिखो. If an individual satisfies, नीचे लिखो. If an individual satisfies any one of the basic conditions, if an individual satisfies any one of the basic conditions, if an individual satisfies any one of the basic conditions, then he is known as क्या बेटा? Resident. Next line. Resident is further classified into resident is further classified into resident is further classified into ROR and RNOR. Resident is further classified into ROR and RNOR based on resident is further classified into ROR and RNOR based on additional conditions. Resident is further classified into ROR and RNOR based on additional conditions. Under section 6. Under section 6. नीचे लिखो बेटा. Number 1. Number 1. He must be resident in India. He must be resident in India. He must be resident in India in at least. He must be resident in India in at least 2 out of. He must be resident in India in at least 2 out of 10 previous years. He must be resident in India in at least 2 out of 10 previous years preceding the previous year. 2 out of 10 previous years preceding the previous year. Clear, no? He must be resident लिखे ना हम लोग. Exactly. And को underline करना बेटा please. Yeah? And next लिखो. He must be in India. He must be in India for a period of. He must be in India for a period of. कितना बेटा? 730 days or more.
He must be in India for a period of 730 days or more during 7 years. He must be in India for a period of 730 days or more during 7 years preceding the previous year. चलता है पीवे. अभी पीवे लिख लो आप लिखते वक्त, कोई बात नहीं. शायद मैं खुद भी ऐसे लिखा हूँगा लिखते वक्त. एनीवेज सर, क्लियर है सर? ये आपको लिखना है एक बार. हाँ, ये लिख लो नीचे. ओके बेटा, लिखना सब ठीक है. गुड. सर डन. चलो, व्हाट इज सेक्शन 224? इनकम 225A, 229C, MMR. आ गया ना आंसर? बराबर है. सेक्शन 61 कितना कंडीशन है बेटा? व्हाट आर टू कंडीशन? फर्स्ट वन, कम ऑन. He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year, or he must be in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during 4 years preceding the previous year. Correct? Additional conditions, how many are there? 2. What is the first one? He must be a resident in India in at least 2 out of 10 previous years preceding the previous year, and he must be in India for a period of 730 days or more during 7 years preceding the previous year. 3:5 नहीं है बेटा, 3:5 बेसिक वाला है, ये 730 है, डबल है उसका. सर क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको ये कंडीशंस? स्पीक आउट एवरीबॉडी. नाउ डोंट राइट एनीथिंग, जस्ट रिलैक्स. स्पेशल केसेस आई टीच यू टुमारो, बट प्लीज अंडरस्टैंड सम स्पेशल पॉइंट्स हियर. लिसन केयरफुली सर. सर, we are talking about something called section 5, scope of total income. Scope of what, sir? And as per that,
we'll divide income into two categories of income. So please listen, this concept is very, very important. Listen, we'll divide the income into two categories of income. First category is called Indian income. Second category is called foreign income. Now, what is Indian income? Indian income is that which is accrued. Indian income is that which is accrued or received or deemed to be received. So deemed का मतलब जानते ना हम, deemed to be received or deemed to accrue or arise in India. चलो बेटा, इंडियन इनकम मतलब क्या है बेटा? Income accrued or received or deemed to be received or deemed to accrue or arise in India. So let's take a small example, my dear friends here. So imagine I'm taking class in Pune, or let's say I'm doing some work in Pune. Correct, my dear friends? And I told the person make the payment. He told us payment तो अभी नहीं देंगे हम. आप next month दुबई जा रहे हैं ना? Example. आप next month दुबई जा रहे हैं, दुबई जाएंगे तो दुबई में हमारा दोस्त आपको पेमेंट देगा. Activity is done where? India. Payment received where? Dubai. What kind of income? Still it is called as Indian income. If activity is done in foreign, but payment is received in India, still we call it as what? Indian income. So I repeat again. Activity done in India, payment received outside India. What is income? Indian income. Activity done outside India, but payment is received in India, still Indian income. Activity done in India, payment received in India. Activity done outside India, payment received also outside India. Foreign income means income which is accrued and received outside India. Accrued and received where, my dear friends? Outside India. समझ में आ रहा है सर बात ये? Speak out बेटा. So if accrued in India, what do you call it? Indian income. If it's not accrued in India but received in India, Indian income. दोनों इंडिया में Indian income. Accrued, received both outside India. What do you call, my dear friends? Foreign income. So getting clarity, everybody. Now why I'm teaching this point is very clearly to tell you that Indian income में तो क्या होगा, foreign income में तो क्या होगा, हम बात करेंगे अभी. तब से हम मेहनत कर रहे हैं इतना कि आर वाले तो क्या होगा, आर तो क्या होगा, एन तो क्या होगा. इतना मेहनत हम इसलिए करें because we want to understand what difference it makes. You're getting my point, everybody? So speak out. Now listen. Don't trade anything. Just listen and relax. ROR. This gentleman is taxable on both Indian as well as foreign income. That's why we say he is taxable on global income. Wherever he goes, tax will follow him. So getting my point, everybody? Speak out. अब जब भी आपका आंसर आर आ रहा है, आप सब लोग खुश हो रहे हैं. आर आप खुश नहीं हो रहे. सबसे पहले कौन खुश होगा? गवर्नमेंट खुश होगा, इनकम टैक्स वाला खुश होगा. भैया ये अपना आदमी है, पकड़ो इसको, पूछ भाई क्या इनकम है बाहर तेरा. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि उसको कैसे मालूम पड़ेगा बाहर का इनकम क्या है मेरे पास. बराबर ना? रिटर्न ऑफ इनकम में एक कॉलम है. Whatever assets you have outside India, whatever foreign incomes you have outside India, you should report it. नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं. अगर रिपोर्ट नहीं करे तो दिस फेलो विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम दैट फॉरेन कंट्री. इतना रिलेशन है इंडिया के साथ, इंडिया वाला फोन करके पूछेंगे डेटा दे दो, हर बंदा डेटा देगा एक्सेप्ट फॉर स्विस बैंक बिकॉज दे हैव गॉट देयर ओन पॉलिसीज विच दे आर नॉट गिविंग इट. सो गेटिंग क्लैरिटी. सो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते, नहीं निकालने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. सर आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, एवरीबॉडी. स्पीक आउट. सो इफ पर्सन इज ROR, what will happen? He is taxable on both Indian income and foreign income. Technically, he is taxable on what income? Global income. So getting clarity? अब नीचे देखो. Non-resident. He is taxable only on
Indian income. Non-resident is taxable only on what income, sir? We will not touch the non-resident for foreign income. We will not touch non-resident for foreign income. Very logical point also, because this gentleman is not a resident in India and he made some money in foreign. How can Indian government ask him to pay the tax? For example, David was an Australian player. An Australian player is going to South Africa, making money in South Africa. Indian government tell pay tax in India. फिर वो दिखाएगा अपना टैलेंट. करेक्ट नहीं सर? Are we clear with this point, everybody? Speak out. Shiva Teja is going to South Africa, making money in South Africa. Indian government is telling, भैया शिव तेजा आ जाओ, तेरा स्टेटस क्या है? हम बोले ROR, बैठ फिर. तो बराबर ना यार, because ROR is taxed on what income? Global income. बीच में एक बंदा बैठा, वो ना यहाँ पे ना यहाँ पे, क्या है उसका नाम? RN. He is a resident, but he is not a ordinarily resident. इसको क्या बोले पता है? This gentleman is taxable on Indian income. Taxable on Indian income, and he is also taxable on foreign income in 2 cases. He is also taxable on what income, sir? Foreign income. In how many cases? Except for the 2 cases, we will not touch him at all. So getting clarity, everybody? अब सुनो बेटा, क्या है वो 2 cases? Number 1, business income, which is controlled wholly or partly from India. चलो बेटा क्या लिखे हम? Business income which is controlled wholly or partly from India. से समझ में आ रहा है ये पॉइंट? बेटा बोलो बेटा. सेकेंड पॉइंट सुनो भी. प्रोफेशन इनकम. क्या इनकम बेटा? प्रोफेशन इनकम which is set up in India. Set up in India means having an office in India. He is not working as a freelancer. He is having an office in India. Fixed place of setup in India. So freelancer is different. Fixed place of business is different. What is freelancing? Freelancing word सुने क्या? उसका कोई ऑफिस नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, जो बुलाते हैं वहां पे जाता है. समझ में आ रहा है सर? Speak out. Everybody getting clarity on this point? Please reply. Come on. Are we clear with this, everyone? Speak out. Right. Abhi, let's take some examples to get a clarity on this concept. Then only I'll complete the story. Till that time I don't complete the story. Because अभी तक मैं जो बोला आपको दिमाग में बस थोड़ा 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 गया है, थोड़ा ऐसा सुन रहा है, हाँ 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 हाँ, ऐसा फीलिंग वाला कॉन्सेप्ट है. बराबर ना? अभी सुनो, फुल क्लैरिटी आ जाएगा. Let's say for example, one of our friend Gaurav, spelling बराबर है? हाँ, wonderful. This person Gaurav, he is having one property in UK. बेटा प्रॉपर्टी कहाँ पे है बेटा? UK. Property is in UK. So Gaurav is the owner of the property. There is one person, Mr. A, who is in UK, who is a tenant of the property. बेटा क्लियर है? And tenant is paying rent to Gaurav brother who is in UK. एग्जाम्पल बोल रहा हूं, आप ही ले लो, एग्जाम्पल बोल रहा हूं. सर समझ गए ना सर? सर क्लियर है बेटा? सर स्पीक आउट. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कौन सा हेड ऑफ इनकम है? ये क्या बेटा? हाउस प्रॉपर्टी. वंडरफुल. रेंटल इनकम है, पक्का जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे. सर यस और नो? मैडम बराबर है. गुड. वेयर इज द प्रॉपर्टी? वेरी गुड. नाउ टेल मी, इनकम अक्रूड वेयर? यूके. अरे बोलो यार. अक्रूड विल हैपन. जहां पे प्रॉपर्टी है वहां पे अक्रूड होगा ना यार. अक्रूड इन यूके. रिसीव्ड वेयर?
डू यू एग्री टू दैट? ये इंडिया में रिसीव हुआ क्या? स्पीक आउट. व्हाट इज द नेचर ऑफ इनकम? स्पीक आउट. व्हाट डू वी कॉल इट? अब मुझे बोलो, इज इट टैक्सेबल इन इंडिया फॉर गौरव? आप नो कैसा बोलेंगे? पहले रिवर्स आपको मुझे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा. You should ask me a question. What is the status of Gaurav? Correct? No, based on that we'll decide. So, to check whether it is taxable or not, if Gaurav is ROR, it will become taxable. RNOR, not taxable. NR, not taxable. So, in this chapter, we are going to solve problems on two concepts. Concept number 1, residential status. Concept number 2, if ROR, what is taxable? If RNOR, what is taxable? If NR, what is taxable? You're getting my points? So, my dear friend, let me tell you one point very, very clearly today itself. Taxability of any person, taxability of what? Any person will depend upon only two parameters. Parameter number 1, residential status. Parameter number 2, nature of income, whether it is Indian or it is foreign. So, getting my point, everybody? Speak out. Now I'll ask you one question, think properly and tell me. Vinod Reddy sir is ROR. Is what, sir? ROR. He went to US. In US, there is one coaching center for CA coaching. Example. Okay. There he went to US in one coaching center in US and he has taken classes for the coaching center in US for costing classes. And he made some money in US. They gave him dollars. He put the dollars in pocket. Okay. Speak out. Is it taxable or not? Speak out. What kind of income? Foreign income. Why? Accrued in US. Received in US. Is it taxable? Speak out. I'll ask you one next question. Now think properly and tell me. One person, Mr. Ching Chang Chu. क्या है बेटा उसका नाम? Ching Chang Chu of Hong Kong. चाइना नहीं. चाइना तो बहुत प्रॉब्लम हो गया ऑलरेडी लाइफ में. Ching Chang Chu of Hong Kong. He wants to come to India. He wants to come to India and take classes in India for CA students. He took class in India for CA student, made money in India from CA students. For the first time in his life, suno clearly, for the first time, I'll repeat the question once again, interesting question here. Suno, Mr. Ching Chang Chu, ye to bas yaad rakh liya. Mr. Ching Chang Chu of Hong Kong came to India for the first time in his life and he stayed in India for 30 days. For the first time in his life, he came to India. And during previous year, he stayed in India for 30 days. And in India, he has taken CA classes and he has earned 5 lakh rupees. He has earned. Is it taxable? Speak out. Speak out. Residential status क्या है? फिर भी taxable है क्या? Because what is the nature of income? Indian income. Because accrued in India. You're getting my points? So अगर taxable है नहीं है बोले के लिए हम दो ही पैरामीटर देखते हैं बेटा. एक पहला पैरामीटर क्या है? Residential status. दूसरा पैरामीटर नेचर ऑफ इनकम. इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है, उसके ऊपर डिसाइड करते हैं हम लोग whether ये टैक्सेबल है या नहीं है. सर क्लियर है? सबको क्लैरिटी आ रही है? एग्जाम्पल क्लियर है बेटा? स्पीक आउट. मैं जब सीधा पूछता हूं फॉरेन इनकम टैक्सेबल है या नहीं है, आप ये मत बोलो टैक्सेबल. अरे भैया पहले ये तो पूछो कि वो ROR है, RNOR है, NR है. So getting my point, everybody? Speak out. Next example. Shiva Teja, a chartered accountant who is having an office in India. ठीक है बेटा? I know Hyderabad I have an office. Yeah? Now, I went to US, rendered service to PQR Inc. and received $50,000. कम हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो. Received $50,000. Received $50,000 there itself. Question is it taxable? अरे कैसा बोलेंगे यार आप यस? कोई तो यस बोला अभी, मत बोलो यार ऐसा यस नो यार प्लीज यार. अभी
आधा क्वेश्चन सुन के कैसा बोलेंगे आप यस? सामने वाला आके बोला ही नहीं आई लव यू, आई बोलते आप यस बोलते क्या? पूरा सुन तो सर आई हेट यू बोल रहा है, आई लव यू बोल रहा है। मैं कब बोला मेरा रेजिडेंट है? रियलिटी ठीक है, अभी सुनो तो सर यार। शिव तेजा ROR क्या होगा बेटा? सर आप अभी तक एक चीज समझ में होंगे, ROR बोले तो नो डिस्कशन, कुछ बात करने का नहीं है, सीधा बोलेंगे टैक्सेबल, क्योंकि भैया है अपना बंदा है। कौन है वो? ROR। एक बार कोई बंदा बोलता है ROR, गवर्नमेंट बोलता है आ जाओ। क्लियर एवरीबॉडी? देन RNOR, RNOR also taxable because this is a professional income having a setup in India. स्टूडेंट पूछ सकता है अभी सर पहले तो आप बोले ही नहीं, यहाँ पर रेंटल इनकम का आप कुछ ऐसा बोले ही नहीं। मैं इसलिए नहीं बोला बेटा बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली दैट फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल फॉर RNOR only in two cases. What are the two cases? Business income, which is controlled wholly or partly from India. Professional income, which is set up in the what nature of income? Professional income. Is there a setup in India? अरे बोलो यार, setup is having an office in India. ऑफिस का साइज का कोई लेना देना है नहीं, सेटअप है या नहीं है बस। Is there a setup in India? Yes. RNOR taxable? Speak out. Foreign income still it is taxable. NR को फॉरेन इनकम के लिए कभी हाथ नहीं लगाना उसको, बिकॉज आप खुद समझ जाओ, अरे वो नॉन रेजिडेंट बंदा है, वो जाके फॉरेन में अपनी मेहनत से फॉरेन इनकम कमा रहा है, इंडिया वाला बोलेंगे उस टाइप टैक्स भर, लात मारेगा आके वाके। अरे बराबर ना यार, लॉजिक समझो यार आप। डेढ़ वानर आके इंडिया में कुछ काम कर रहा है, इंडिया में कुछ पैसे कमा रहा है, तो उसको बोलेंगे भैया डेढ़ वानर टैक्स भर, वो बोलेगा ठीक है भैया यहाँ से ही कमाए तो यहाँ टैक्स भरता हो। डेढ़ वानर जाके ऑस्ट्रेलिया में कुछ पैसे कमा रहा है या न्यूजीलैंड में कुछ पैसे कमा रहा है, इंडिया वाला फोन करके बोल रहा है भैया तू इंडिया में टैक्स भर। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं इंडिया में थोड़ी पैसे कमाए यार, मैं हूं नॉन रेजिडेंट, मैं किधर जाके कमाया? न्यूजीलैंड। तू कौन है रे टैक्स पूछने वाला? अगर ये डेढ़ वाला रेजिडेंट बन गया, समझो एक साल 182 डेज इंडिया में रह गया या 63 में सेटिस्फाई कर दिया, बाय मिस्टेक वो ROR बन गया, समझ रहे सब? बाय मिस्टेक ROR बन गया, वो न्यूजीलैंड जाके कुछ पैसा कमाया, इंडिया वाला फोन करके बोलते टैक्स भर, वो क्या बोलेगा? ठीक है भैया भरता हूं। क्यों? ROR is taxable on global income. सर क्लैरिटी आ रहा है सर? We'll solve lot of questions on these concepts. Are we getting clarity? I think today we got a complete framework of what this chapter is all about. We are going to solve questions where we are trying to evaluate whether that fellow is a resident or non-resident or ROR or NOR. After that, we are going to decide which income is taxable, which income is not taxable. So getting clarity everybody? Speak out. चलो ये लिख के क्लोज कर लेते हैं। क्या लिखे लास्ट आप लोग बोलो? यहां तक हो गया ना? उसके नीचे एक नोट लिखना बेटा। Stay in India need not be at fixed place. बराबर? Be at a fixed place. करेक्ट है ना? 50 दिन तेलंगाना, 50 दिन महाराष्ट्र, चलेगा ना यार? Stay in India need not be at a fixed place and shall also include territorial water. Correct? And shall also include territorial waters. So clear? Next note, note 2. The day of coming. ये मालूम पड़ता है ना मैडम पासपोर्ट से? द डे ऑफ कमिंग एंड द डे ऑफ गोइंग. द डे ऑफ कमिंग एंड द डे ऑफ गोइंग इज ऑलवेज क्या बेटा? इंक्लूडेड. बराबर ना? बात हुई थी इस बारे में, रात में 11:30 को भी आएगा, आधी घंटा तो है, तो इंक्लूडेड स्टिल. क्लियर एवरीबॉडी? स्पीक आउट. नेक्स्ट पॉइंट नोट हो गया.
Put side heading section 5, scope of total income. Careful. Answer section 5, scope of total income. आपको बेसिकली ये चीज लिखना है सर आपकी बुक में, बट लेट मी ऑनेस्टली टेल यू दैट वी हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन दीज टू कॉन्सेप्ट्स विच विल टेक सम स्वीट टाइम फॉर अस. डीम्ड टू बी रिसीव्ड का मतलब क्या है? दिस इज गिवन बाय सेक्शन 7. डीम्ड टू अक्वायर्स इन इंडिया का मतलब क्या है? दिस इज गिवन बाय सेक्शन 9, विच विल टेक सम स्वीट टाइम. क्लियर है ना? बिकॉज नाम ही बोलता है डीम्ड, मतलब इंडिया में नहीं आया बट इट इज डीम्ड टू बी इन इंडिया. तो डीम्ड का वर्ड बहुत डेंजर वर्ड है, जिसका अपने को टाइम लगेगा. अब ये लिख लो टेबल. Deemed to be received will not take much time, but deemed to occur or rise will take some sweet time, which we'll talk in detail very, very soon. But tomorrow we'll discuss a lot of special cases in 6166. Then we'll solve some problems tomorrow. क्यों नहीं? ऐसा कुछ बोले क्या कोई? अच्छा, अज्यूम कर लिया आप. ये अगस्त बैच हमेशा यही प्रॉब्लम है यार, और आपकी बैच तो इस बार टेरिफिक ही है. बोलता हूँ मैं, बात करेंगे, इससे पहले लिखेंगे फिर बात करेंगे. हो गया लिखना? नीचे लिख लो ये ROR, taxable on both Indian income, foreign income. So by this statements what I wrote, can I conclude that if an income is Indian income, it is taxable for all? Do you agree? ROR को Indian income taxable है, RNR को taxable है, NR को taxable है. So once an income is Indian income, it becomes taxable for all. Indian income की बात कर रहे हैं हम. If it is Indian income, it is taxable for all. कोई भी कैटेगरी का बंदा हो, इंडियन इनकम में तो टैक्सेबल हो ही जाएगा उसको.
बेटा हो गया? चलो ये लिख लो एग्जाम्पल 1. नहीं प्लीज 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 डोंट पैक, गिव मी 5 minutes प्लीज. एग्जाम्पल 1. अच्छा क्लियर है? लिख दिया आप एग्जाम्पल 1. कैन आई स्क्रॉल डाउन? बेटा हो गया क्या? एग्जाम्पल 2 लिख लेना, लास्ट एग्जाम्पल. सर डन हो गया? That's it. That's about the story of your section 6.1 and 6.6, and also about something related to section 5. But there are a lot of special points to talk in detail, which we'll talk in detail very soon. Clear, friends, everybody? All of us? Done. Thank you so much. See you tomorrow. But sir, one thing let me tell you very clearly, this August batch थोड़ा सा critical batch ही होता है हर बार. I'll tell the reason why. Because February में जो batch होता है, February to February March जो batch चलता है, और April whatever you call it, that is never a problem because उसमें festivals वगैरह वो सब आते नहीं. बट अगस्त बैच तो इतना खतरनाक बैच है, और इस बार तो नेक्स्ट लेवल ही चल रहा है. द रीजन बिकॉज आपके बैच के ड्यूरेशन में ही गणपति का फेस्टिवल है, जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है. बीच में दसरा है, उसमें नवरात्रि करके सेलिब्रेट करते हैं बस. फिर बाद में आ रहा है बीच में दिवाली. और यस, ऑन द टॉप ऑफ ऑल दीज थिंग्स, द पॉइंट टू बी नोटेड इज योर रिजल्ट्स केम लेट. Your classes which were supposed to be started by first week of August started in last week of August.
और आज 29th ऑफ अगस्त है, 2 दिन में सितंबर आ जा रहे हैं. अभी आपको लगेगा यार May 23 है ना यार, क्या इतना सोचने का, इतना टेंशन नहीं लेने का. बट लेट मी टेल यू ऑनेस्टली दैट इट वोंट वर्क लाइक दैट, बिकॉज आई टेल यू व्हाई. सी how much ever you guys take that importance, we also equally carry that importance, because I'll tell you why. At any cost 5th नवंबर को आपका जीएसटी तो चालू करना ही पड़ेगा, बराबर. द रीजन आई टेल यू वाई. 15 दिसंबर तक आपको ग्रुप 1 फिनिश करके ग्रुप 2 का कोचिंग तो चालू करना है, और 15 दिसंबर के टाइम पे आपको मालूम पड़ेगा कि पहली बात हमारी हालत क्या है. करेक्ट है ना यार? नहीं मजाक नहीं करो, सच्ची सच्ची बोल रहा हूँ. मेरे कल भी तो 1-2 स्टूडेंट पूछ रहे थे, सर हैदराबाद में सब लोग ग्रुप 2 ग्रुप लिखते, 1 ग्रुप लिखते. बोला ऐसा, अरे ऐसा थोड़ी ना रूल है यार, 1 ग्रुप लिखना है, 2 ग्रुप लिखना है यार. सी माई ओनली प्रिंसिपल विच आई टेल ऑलवेज इज दैट वेदर यू राइट 2 ग्रुप्स और 1 ग्रुप, दिसंबर तक तो आपको यही कोचिंग तो लेना है, कुछ फर्क तो कुछ है नहीं. देयर इज नो चेंज एट ऑल. बट माई ओनली पॉइंट इज व्हेन यू स्टार्ट रिवाइजिंग, स्टार्ट स्टडिंग along with the class, you feel more comfortable about it, and then you take your group 2 coaching, things will become better for you. And obviously my humble advice will be write 2 groups only, which I'll obviously tell, because that adds value to you and we can quickly finish off. As quickly you complete your CA journey, it's more wonderful it is. Correct, right? And why should we degrade ourselves that अपने को एक ही ग्रुप ही लिखना है, एक ही करना है. स्टार्टिंग से माइंडसेट क्यों बनाना है अपने को? Let's be positive that let's go for 2 groups. No, if we are more positive, we'll approach more differently. अपन दिमाग में बोलते हैं हमको 8 महीना है, सिर्फ 8 महीने में तो एक ही ग्रुप करना है यार. That's not how it works, no. And if you do your second group coaching from December, it will complete by February. Correct? 2-2.5 महीना चलता है वो, तो बचा क्या आपके पास? मार्च और अप्रैल लिखना है अपने को 8 सब्जेक्ट. में मत बोलो, वो तो लाइटनिंग है, ऐसा जाएगा ऐसा आएगा बस. 8 सब्जेक्ट करना है. बचा कितने महीने? 2 महीने. एक बार स्प्लिट करो, 2 months, how many days? 60 days. How many subject? Effectively you have 7 to 8 days per subject to revise. That's it. So please don't tell your brain May 23. We are still in 22. That's a big joke. That's a myth. According to me, that's a myth. अपना दिमाग बोलता है ऐसे, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, दिमाग ऐसे ही बोलता है. 23 में ना यार एग्जाम, बहुत टाइम है अभी, बहुत बाकी है, अभी तो चालू करे. My only point I am trying to tell all these points is अभी चालू करे. Good, I understand that. But along with that, become serious. Day to day basis, wherever you are taking coaching, whatever subject you are taking coaching. Sorry, whatever subject you are taking coaching, wherever you are taking coaching, ensure that on a daily basis, in the evening time, just sit half an hour, 1 hour, revise everything once again. I would have actually told 2-3 hours, but I'm saying half an hour because सुबह से शाम तक तो क्लास में ही आप लोग, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं बोल पा रहा हूँ. और एक बार जब ये नवरात्रि टाइम चालू हो जाएगा ना, रोज कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलते रहता है. कोई दोस्त बोलता है चल भाई मेरे हॉस्टल चल, यहाँ पे कुछ टाइम पास है, यहाँ पे प्रोग्राम है. 9 days में कम से कम 3-4 दिन तो टाइम पास करेंगे. और दिवाली के टाइम तो डेंजर है. आई मीन आई एम सेइंग डेंजर बिकॉज दैट्स ए बिग फेस्टिवल फॉर ऑल ऑफ अस, इंक्लूडिंग यू, बिग फेस्टिवल फॉर ऑल ऑफ अस. मतलब मेरा भी खुद दिमाग बोल रहा है कि अभी दिवाली से पहले बैच हो गए तो अच्छी बात है, बराबर ना यार. बिकॉज दिवाली इज कमिंग समवेयर अराउंड 24-25 अक्टूबर के आसपास आ रहा है. कैसे भी अक्टूबर एंड तक अपना सिलेबस तो हो ही जाएगा. यू गेटिंग माई पॉइंट ना? बिकॉज 2 months वी टारगेट, 23rd August वी प्लान्ड, सो 23rd October एग्जैक्टली इफ आई टेक इट. बट 23rd October एग्जैक्टली तो हो नहीं सकता है, 3-4 दिन तो ज़्यादा हो गए होगा, बिकॉज कंसिडरिंग ऑल द holidays in between and all. See, effectively what classes I take is 50 days without any holiday, 50 days of 3 hours each, 150 hours is what this income tax requires. You're getting my point, everybody? And effectively close to 100-120 hours is what your GST requires. Not more than that. Not more than that. Considering the subject, quantum, what is involved in that subject. Correct? No. पढ़ाने के लिए क्या है, मैं पढ़ा दूंगा आपको, 250 घंटे भी पढ़ा सकता हूँ मैं. अपन कुछ प्रैक्टिकली हट के थोड़ा बाहर आके डिस्कस करते बैठेंगे. सुबह 8 से लेकर शाम में 7 बजे तक मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसा करे. आई कैन डू दैट, बट द होल पॉइंट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड इज द होल क्वेश्चन. नो, करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स? सो आई हैव ए थॉट दैट दिवाली से पहले खत्म करते हैं. अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दिवाली के बाद वापस आते, वापस 4-5 दिन पढ़ के चले जाते, क्या फर्क पड़ेगा. इट्स ओके, आई एम हैप्पी टू कम. यू गेटिंग माय पॉइंट? नो, मतलब माई पॉइंट इज नॉट दैट दिवाली से पहले कैसे भी करके खत्म करना है ये. अगर कुछ मिस भी हो गया तो बाय बाय बोल के चले जाऊंगा मैं, ऐसा कुछ नहीं है. अगर कुछ है तो वापस आके पढ़ाने वाले हम लोग. देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट. क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? आई मीन आई डोंट नो वेदर, I mean I doubt most of you guys know me before or not, but
my point is very clear. My agenda is very simple. Since that I have been in Pune before also in 15, 16, 17, there have been a lot of students from Pune also who have got very good scores under the guidance of mine in taxation. And in Hyderabad also there have been considerable hundreds of students to whom we made them get the exemption. The reason being very clear that we don't leave any concept for a toss. Concept है तो हम जान दे देंगे. There is no second thought about it. Because concept is something which is the most important thing. If you get it, if you solve one problem, according to me, solving more than 2 problems, more important to become perfect in concepts. Because you should get ability to solve. 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तीसरा टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट परफेक्ट हो जाओ, 3 टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करो, ऑटोमेटिकली परफेक्ट हो जाएंगे. That's a whole funda what I carry. You're getting my point, everybody? So we will ensure that we'll put the best effort in terms of concept. There's no doubt about it. Clear, everyone? Because my principle is very simple. Or good that this batch, I have come to Pune after 5 years to take classes in Pune with Vinod sir. I'm happy for that at the same time. And our class size is also not so big. So since the class size is also small, that we can interact more one-on-one also after the break, during the class and all, we can happily feel free to ask your doubts. And wait, even 200-300 का बैच है तो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मतलब 40 है तो वैसे ही पढ़ाऊंगा, 200 है तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा. There's no doubt about it. Because if you talk to your seniors who have been in my class in 17, 16, in 2016-17 I had a size of almost about 250, 280, 300 students were there here itself, in expert itself. But I left only because I had some personal reasons that I had to stay in Hyderabad. My physical presence was required there. That's why I stopped coming to Pune. But now it's all set. That's where I'm back to Pune. So whatever is the size of the crowd, next 1-2 batches में तो ये पूरा full कर देंगे हम. Definitely वो तो doubt नहीं है. But my point is very clear that this batch, make use of it. That हम साथ में कुछ time spend कर रहे, तो let's both of us make use of it. I'll be more than happy to spend some time with you guys because first batch is always very, very special for me also, obviously, because कल के दिन अगर 500 बच्चे भी क्लास में आएंगे तो आप सब लोग तो स्पेसिफिकली मुझे याद होंगे because 2 months we traveled together personally. That affection is always there. Correct, no? You accept to that, right? That special feeling is always there. मुझे एक्चुअली कल परसों 2-3 स्टूडेंट्स आके मिलके गए थे जो 2015 और 16 में मेरे पास पढ़ चुके थे. And I felt so happy seeing them because they were first batch students of mine. Obviously यार वो बॉन्ड तो बन जाती है यार, 2 महीने में कितना बॉन्ड बनेगी और साइज ऑफ द क्राउड छोटा है तो ऑटोमेटिकली दैट बॉन्ड बढ़ जाती है. And my only point is, along with that bond, let's ensure that we get some amazing numbers and prove to our parents, prove to ourselves that we can do some wonders. Do it. And ये सब ध्यान में रखे, आप मेहनत करो because दिवाली फेस्टिवल 1 हफ्ता का आ जाएगा, दसरा 1 हफ्ता का आ जाएगा, गणपति फेस्टिवल 1 हफ्ता का आ जाएगा. When I say 1 week is gone, I mean to say very clearly that your